Okay, great, yeah. Hello everyone. Good afternoon. Hope you all are doing well. Greetings from Entrepreneurship Development Cell. Hope you all are doing well and safe and are very excited for today's session. For today's workshop, we are delighted to inform that our president Amit Sachdeva will be enlightening us on the LinkedIn platform in order to create the perfect LinkedIn profile. He is currently in the final year of Masters of Data Analytics. He has been leading the society for more than 6 months now, and the society focuses not just on the enlightenment of the students, but the courage to pursue their own ventures, but also in helping them lead teams and managing tasks, which is important for their overall holistic improvement. Great. Thank you, Debakshi, for enlightening the crowd with my introduction, of course. So, some few words from my side also. My name, you guys know, it's Amit Sadeva. I have been delighted with an opportunity to lead a team of grateful people as well as leading the EDC team. So, today we have gathered over here to discuss about the LinkedIn as well as about your CVs. So, Abhi tak you guys would have gotten this thing from the college as well. Keep build your LinkedIn profile through your teachers as well. Work on your CV. Some kind of orientation program have been done. But this won't be a perfect orientation program. We would be focusing on the LinkedIn and your CV. Along with that, we would be discussing how you guys can enhance your LinkedIn. Making a LinkedIn profile is too easy for just getting the sign up. So we would be discussing how you can build the LinkedIn profile as well as your CVs to gain more interest as well of the recruiter and more insights into your profile through your professional profiles. Okay. So myself, as Dipakshi told, into my final year, already got a placement, one of the highest offers into the college. So along with that, a part-time entrepreneur and a part-time trader also. So you guys are always welcome to get in touch with me over LinkedIn. Of course, I would be looking forward to have your requests coming in my profile in LinkedIn profile. So through your LinkedIn profile solely. So looking forward to it. So I hope all are doing well at your home. We know the COVID cases are rising these days. We had to meet in college also, but Omicron's fault it all. Surely, guys. I guess I can see some of the chat in someone in the chat session. So, people, you guys can at least greet everyone in the chat or by opening your mic. Hi, Rin. Hi, Sid. Yataat, hi. Good evening, Bhaiya. Hi भैया, good evening यार. Yeah, good. Hi. Also, request Hi if you guys Bhaiya. can open your camera for few minutes only, we can have this thing, the screenshot session and all. Yeah, sure. Just a second. Great, guys, great. And before starting the session, anyone wants to share their experience till date, how they have been doing into the college and all? How's it going? Of course, online classes तुम लोगों के लिए भी नई नहीं है, of course. You guys have been doing it in 11th and 12th. हमारी तो पूरी MBA निकल गई, of course, in online. So you guys want to share something? Anyone? Hectic, lot of projects. Higher projects. If you guys are not doing the end semester exams, so projects is a good way out, I guess. Great, guys, great, great. So let's start. I guess I can see quite a many people. Okay, thank you all for attending this thing, yeah. And of course, I believe you guys would be attaining quite a knowledge about LinkedIn as well as what we have learned over the year. So my background was coming from an engineering background, getting into management role. So quite a journey. So we would be discussing over that through my experiences and all. Okay, great. So when we talk about LinkedIn, what is the first thing you guys, what is the first thing that comes into your mind? The chat section is all yours. Just type into that connections, LinkedIn, link, of course, getting professional. Yes, great, guys, great. So, of course, all these words describe the LinkedIn profile, what LinkedIn is all about. So, a LinkedIn profile, it's just like in simple words, we can see that it's a digital CV of yours.
any recruiter that would be over there. You can just ping them your LinkedIn profile. It would be your digital CV. So digital CV, if we talk about a CV, curriculum vitae, so that is about your the thing, the CV. That is your the what you have done over the years, what you can show to the recruiters, what you portrayed yourself out. Instagram पे सब लोग they have a very good profile of them, showing कि हम बचपन से कैसे कैसे we have transformed over there. So similarly, over LinkedIn, you have to show your professional journey, how you have transformed over the year, what are the work you have done over there. Similarly, on your CV front also. So CV is for your personal use, LinkedIn is for the world to see you yourself. Okay. So, of course, if some points we read out from the slides also, it can help you tap into the industry news. Of course, if you are in connection with good people, good meaningful people, they can teach you about, get you with the news as well as the current trend. Some people have been doing, I also did in past, that a streak about the posting streak. So it was all about posting every day, just like over YouTube or Instagram, we post every day a story. So similarly, we can post some articles over there. So there are many people. We would be getting it over there also. You can tap into powerful job board. Of course, quite a many internship. Getting an internship right now is the most difficult thing during the online period. Either you have to get the thing connections into the organization, or you have to slog your way into the organization. So slogging your way is the best thing to get connected with meaningful people over LinkedIn. So LinkedIn linking with the people. So, of course, you can search about the company and its employee. Some company is coming to our campus. You can always look forward to what the company is all about over LinkedIn, over through their website also. But what they portray into in front of the people, you can see about research about the companies and its employees. So all these points we would be covering through the practical examples also, looking into the LinkedIn. Okay. So other than that, you can build your own brand. So something this is what entrepreneurs have been using LinkedIn for. So entrepreneurs have been building as well as portraying their expressions through Twitter is all about tweets, small tweets and all. So similarly for LinkedIn, they have been portraying themselves as with what their vision is all about their company and all. So they portray themselves over the LinkedIn profile. I can see many people have been giving out this thing, LinkedIn connections. You guys can do it afterwards also, so it maintains a Rolex of contacts. So something we have seen over LinkedIn, but my batch have been seeing this thing that people have been posting over LinkedIn that I need an internship, I need a job. So many connections come forward to help them out also. So it is not about just like Instagram algorithm that once you comment on your friend photo, it would be personal to your friend. Nobody else or your following would be seeing that comment. But over LinkedIn, what it does, when a recruiter or someone gives post a comment on your post, it would be shown to their connections also. तो recruiter के connections को भी सारा आपका post दिखता है. तो it helps into networking also. So once a post is getting traction, it is getting a good reach, then people can post on that post also and get you in contact with many recruiters. So this is what LinkedIn helps you about. So it helps you get a rank on your Google profile also, and the recruiters. When you use some keywords like I'm into data analytics, I'm into trading, I'm into entrepreneurship. So if anyone that comes to our college goes to our college profile and sees that I want to a person that is good at business analytics, then he would be just typing business analytics and he would be getting a good batch number of students from my class or someone into their profile. And network and network and network. The best thing possible is to network as well as get in know. See, guys, like even organization too are using nowadays LinkedIn a lot. Yes, they use this thing a lot for their recruitment process also. Most of the companies that you guys would be applying for, they would be asking for your LinkedIn profile or the GitHub link. Right now, you are not into coding and all, but management roles require you to submit your LinkedIn profile over there. As a coder, as a data analyst, we need to put up any other this thing, the GitHub links and all. But for you guys, it is very important to have a LinkedIn profile and a good professional CV. Okay. So coming to this thing, LinkedIn, quite a good thing to have right now, and this is the perfect moment. Even I created my LinkedIn profile when I entered into MBA. Okay, just 2 years back. So on, it was quite late.
you guys are attending this thing today. So I'm quite a proud thing for me, as well as you should be proud that you have started quite early than me also, as well as from other students that who are not attending or who have not started working onto their profiles right now. It would be very fruitful in your future. Totally telling you this thing. So anyone else want to share anything from this thing? I see. Manvi Goel, a platform where we can useful, yes, professional conversation. Great. So, want to see my profile first? We go into this thing, then we discuss about what we see the LinkedIn layout, what LinkedIn layout is all about. Okay, so we see a LinkedIn layout. It shows the LinkedIn news, the news that are going over here. Okay, you guys can, I can pinpoint some of the things. So this is the news section. Okay, sorry for my bad handwriting or the cursor. Okay, guys. Great. You can start a post. This is just like a posting session. It is very similar to Facebook. I would say this thing. You can start a post with this thing. Uh, Start typing or something that you guys can put over there. This shows your brief introduction about your profile. You have your headline. Just like me, it shows my profile picture, my background picture, as well as the present at USME DTO, what I am doing currently, entrepreneur by heart as well as working into healthcare industry. Okay, so other than that, it shows your messages and all. So I believe you guys have already logged in into your LinkedIn profiles at least. I need a yes or no. Yes, 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 we are yes, Yes. yes. logged in. Okay. Yes, Yes, भैया. भैया. Yes, we are. Yes, भैया. So at least you have signed in. You have not put on the right information, I believe. We would be also seeing someone if volunteering for this thing to show their LinkedIn profile. What is it looking like right now? We can work on that also. So you guys can put that into the chat. So this is the LinkedIn layout, and other than that, it shows quite many companies and a lot of many Ankur Wariko. Yesterday only we had him over our platform for a session. So quite a many people you can follow, as well as you can see many internship opportunities, as well as what people are doing these days. So most of my this thing, the certification program and all have been done because my friends and all were posting about ki I have done this certification program. They showed their certificate over there, and similarly I got enrolled into it. So this kind of way also LinkedIn profile is a good thing. So now coming to your profiles. Okay. So I believe right now your profile would be almost empty. We start with an empty profile. Okay. So we talk about every aspect of a profile, what goes into a good profile versus the great profile, what great profile looks like. Okay, so just a second, pardon me. Yeah. So, anatomy of a great profile, if we dissect the great profile into this thing, we saw the LinkedIn platform layout, but LinkedIn platform quite similar to Facebook, I believe. सब लोग फेसबुक तो पहले चलाते होगे अब तो नहीं चलाते हैं यंग वी हाँ स्टार्टेड हाँ. विद दिस थिंग फेसबुक से Great. So about this thing, a great profile, it should have a professional photograph, first of all. First and foremost thing is to have a good professional photograph. Okay. Similarly, you should have a background that is inclined to your this thing, what you are doing right now. Some founders have been putting out their company poster or something in the background. That is this background image. Okay. I've already put on the Amit Deva only a management student and currently studying into Delhi Technical University. Similar kind of stuff you guys can put on. There are a lot of sites that can help you to make this kind of stuff also. So this was designed over Canva. So you guys can use Canva also. Okay, the next thing, once you are complete with your profile picture and your background image, you can start putting in some of the content about what you have done over the year. Okay, so what about the content? So right now, I believe most of the students coming in are from the BBA and the BBE background. Okay, so you guys have just entered college. First of all, congratulations for a good life ahead. Okay, so along with it, the description headline. Okay, so what the headline should look like, we would be seeing this would be the headline. Just see how the headline is being structured in my profile, and then we would be seeing how you guys can add a similar kind of headline into your profiles. Okay,
So about the headline, I've entered this thing only. We discussed about talks about what I talk about. It is about this hashtags that someone if looking forward to have a startup or entrepreneurship, we type the similar kind of hashtag. My profile would be popping into their search also. Okay, so I've talked. I love to talk about startups, entrepreneurship, business analytics, trading, as well as other things. So a killer profile summary also. A summary would be just like you guys can add a summary, but your summary would be looking like. We talk about that thing. So anyone, Ankit, can you share us your this thing? What's your background? Coming from 12th, how much you scored? मार्क्स बताने हैं क्या? हाँ हाँ, ज्यादा बता दे हाँ यार, मैंने कोई दिक्कत नहीं। कोई चेक नहीं 99. कर रहा। हाँ 99 आए। तो he passed out from XYZ school. He scored. He became the topper of his school in commerce batch, as well as he scored 99 percentile into it. He got the best this thing into USME, as well as doing MBA right now. But his aspirations are, you guys can mention into the summary that I want to be a part of this organization, or I want to get into consulting role, so that once the recruiter gets into your profile. So what my this thing, the summary looks like, you guys can have a read over here also. And I'm experienced business development executive. Summary should be very crisp as well. So, a very distinct experienced business development executive with a demonstrative history of working into e-learning industry, skilled in public speaking, research. These are the tools that I use. BTech focused into mechanical engineering from Bharatiya Vidyapeeth. I've not written about my. You guys can also write about your hobbies into this thing, into the summary. You guys can talk about your aspirations, but where you want to be in next few years, next 2 years only. You guys would be sitting for your placements in the end of third year or this thing, the second year. You guys can mention about your hobbies, your this thing, the aspirations, as well as you guys can look forward to have a role, but what role you guys want to be. Okay, so this thing you guys can mention about. Other than that, we look forward to the next point. And this thing, once you feed in your school, you guys, Abhi, you have just cleared up from your school. You guys can tell them that I have passed on from this school with a percentile. You can write your percentile over there. Along with that, you guys can mention right now you're studying or pursuing BBA, BBE, or MBA. We have Chirag also from MBA, I know. So you guys can mention this thing about your education, what you are doing right now. And other than that, I believe some of you guys would be a part of a community or a society. So you guys can mention that society, what role you are performing over there, as well as you guys can connect with the people who are from the similar society. This is the best thing for LinkedIn. I guess this slide would be very clear to all of you. Clear. Yeah. Okay, great. Okay. Surely you guys can mention your this thing into the chat section if you guys have any doubt regarding LinkedIn profiles. This thing, the layout, or what you guys need to add into this thing. So next we would be discussing about what kind of profile pictures you guys can start with. So why profile pictures are the most important thing? I believe this is because it gets 21x kind of profile views with a picture. If you guys are connecting with a recruiter or anyone that is meaningful or helpful to you guys, so you guys would be getting more profile views with a picture. If you don't have a picture, it won't look like a genuine profile. Other than that, it would be getting more connection requests. You guys would be getting more connection requests as well as more acceptance rate once you get into the profile pictures. So coming to the next thing, if you write about a headline, we discussed about the headline section also. Just a second, sorry. So this is the headline. So if we come into this thing, just a second, this thing is lagging, I guess. Okay. If we say about this thing, the headline, how you guys can add your headline and everything. So once you have your profile pictures, this is the major section that you guys need to have. So over here, you have your first name, the last name, as well as you guys can see this is a section where you can put on a headline.
So anyone from the thing, the participants in the webinar want to share what kind of headline you guys are looking forward to? कुछ सोचा होगा अभी कि कैसी headline लिख सकते हैं? As well as if possible, I can help you with a headline that is poppy, as well as you guys can put on your profile. Anyone from the audience want to share what kind of headline they are looking forward to? Member at a club we have been selected in shortly. As well as you guys can tell, I'm doing BBA in Delhi Technical University. Other than that, any या लाइक hobby कौन or कौन से सोसाइटीज में हम हैं उसके ऊपर बना के लिख सकते हैं लाइक surely, मेंबर्स surely. Other than that, Things we are enthusiastic about. something about this thing, huh? Like said, I have written this thing entrepreneurship as well as healthcare. Write something if you guys are into fitness, gaming. See, so gaming is not something that you guys should hide right now because gaming industry is increasing. If you guys are interested into connecting with people, you guys can tell about your company, any Instagram page or something you guys are running. किस किस का है अभी who all are running a Instagram thrift store or something? BBA student. Okay, Shranj, Girav, we can see this thing. Just a second. Yeah, sorry, I'm not able to see. Okay, BBA student, I'm self-made trader, finance guide, yoga, medical. Surely, surely, a good one. We can state about your internships too. Yes, you can state about your intern at somewhere. Environmental activist, great one. Shranj, get a perfect profile description you have written. The BBA student at DTU, yes. Self-made trader की जगह you can add your the things, keep it short because this is the thing that every recruiter would be seeing. It comes under your profile. Okay, so keep it very short as well as to the point because summary में we can say about self-made trading as well as previous position held. School के भी अगर कोई district level and something like that you guys can mention. Other than that, Sure, thank you for your guidance. sorry, I'm not able to get it. Can you repeat? Saransh this side, thank you for your guidance. Okay, okay, great, great, great. So shall we move on to the next thing? तो अभी ये या वाली चीज edit intro section that is your intro. I guess we also you can see you can post on your current position about your what is the position you guys are currently holding at an organization or you guys would be getting into TNP also very soon. You guys can mention about your current positions over here. This is would be the thing as well as location currently where you stay and all you guys have already filled in. Once you make out the profile, I know there is a section that calls for your education. What are you doing currently? So I guess you guys have already filled in this thing. Am I correct? Keep posting yes and no. We are Yes, into yes, this thing. filled. Okay, great. So next thing up, we come into this thing. I guess what your profile section would be looking right now, it would be having your education this thing. Okay, what's your education? So over here you can add. So again, right now, if the education system is not being showed onto your profile, you guys can easily add through a section. This is the add section. Everyone is seeing this thing. Yes, Bhaiya. Yep. Okay, great. So surely. So about your intro, you guys can add from the intro section. The intro would be a small introduction about this thing. So about section is your intro section. Even you can write a long intro if you guys have a you want to write on a longer base. So other than that, keep it short, keep it crisp so that people entering into your profile can have a look as well as kind of judge you on what you have achieved over the time because this is the thing that LinkedIn is somewhere you can boast about your achievements freely and you would be praised for your achievement that you are showing over there. Okay. So along with that, this thing, the about section we have discussed. Features, see the features is all about the what are the posts and the articles and the link and the media you guys are sharing over LinkedIn.
Once we build out the profile, we would be touching upon what kind of post shall you post over LinkedIn. You cannot post I'm visiting Manali this evening or I'm at Mall Road. Okay, you guys. So about LinkedIn, it is quite professional. People have been doing that. These are small mistakes that we shouldn't incur into our this thing, the starting years. Okay. Along with that, about your background, into the background section, what are the background section about, you can add your education, but about your education would look like you have passed out from your school. Tell from which year you were a part of your school. In the education system, we see this in school. You can type you passed out from the commerce background or the science background field of study. You can state the start years as well as the end year. Along with that, grade 99 percentile was someone from our batch attendees में. So you guys can tell about that. And activities and societies, why it is very important. You guys see, I have not entered about my school days because I created my profile into the management. Okay, uh, quite late after passing out from my school after 4 years. So these kind of achievement doesn't carry much of the relevance once you are into the later years. But right now, for you guys, you have just came out of the school, so you guys should write about your. I was a prefect. I was into the district level championship, or into any cultural society or something. Type about this thing as well as share your school experience. It would be a great thing once you look forward to this thing. Ki I've written this thing about my school. Right now, you would be very much relishing with your memories and all. Write about some of the things that you experience into your school, how it changed you, as well as what was your personal growing. So सबके कुछ ना not about your crazy stories, okay? So learn, tell them about your experience, how the school experience was, okay? ये education वाला, it is clear. Just type yes or no or any Yes, suggestion भैया. about this thing. Yes, Bhaiya. Yes, it's clear. Great. So, of course, always keep this thing, even if you want to show this thing to you and notify the network that you have entered into USME DTU, you guys can share it with your network also. So, this was about the education. So, right now, we are just about making the fundamental of your LinkedIn profile, right? Okay. So, what all should be there as a स्टार्टर पैकेज ओके तो एजुकेशन में स्कूल कॉलेज के नाम लिख दिए हमने फिर उसके बाद वॉलंटियर एक्सपीरियंस सबने 10th से पहले पहले कोई ना कोई हॉस्पिटल वो क्या कहते थे कल्चरल दिस थिंग दी सोसाइटी सर्विस करी होगी एनी वॉलंटियर एक्सपीरियंस about visiting to your this thing schools or old age homes or any hospital for community service. So you guys should write about your volunteer service also in this thing. Red Cross fundraising, volunteering, cause, what was the cause, as well as what the description looked like. What was your role over there? तुमने क्या किया वहां पे पूरे दिन जाके? Share with your this thing. See, this would be enhancing your profile as well as making it long. Once the recruiter gets into your profile, she shouldn't leave your profile with a thing that यार इसने तो update ही नहीं कर रखी है अपनी profile, as well as he has not worked on your profile. This is just like your CV. अगर CV के ऊपर काम नहीं करोगे, the recruiter won't be seeing your face also. So the CV is the first thing that the recruiter sees before your interview or selecting you guys. So I guess for the work experience, I don't know how many of you guys would be carrying any work experience right now or any internship. But then also I would point out this thing, work experience, what work experience looks like, it account for your internships. Okay, what kind of internships you guys have done over the years, as well as if you have worked with your parent also in your family business or something. This is a thing you guys can mention into this thing also, that I helped my father or mother into building something that from the scratch, or what was your role over there. Start to describe yourself in good words. Make a habit whenever you write about your experience or any achievement, add some few lines about your experience because it gives a good look to your profile. Okay, if I see this thing, I show you about my experience as a president of the entrepreneurship development cell.
quite grateful to have what we achieved over the 1 year, as well as how we increase our team. Start writing about this thing. See, अगर मैंने ये description नहीं लिखी होती, if I remove this description, it would be just coming in as a without the description and anything. So just represent about the entrepreneurship development cells, just like this one. See, I have not written purposely. I have not written the description over here. So ये चीज सबको दिख रही है? The campus ambassador have not written the description over here, and just above I have written the description. So about the experience, it shows a good experience that you guys have worked over this thing, as well as seeing into this thing, what the person has done over in the internship or with a job and all. So of course, put on this thing. So clear on this description part. यस भैया. Clear. Yes, Yes. Great, great, great. I guess there are almost how many people? 91 people are there. You guys can, if anyone has a doubt also regarding this thing, about your experience or something, about the about profile that we saw. Bhaiya, you are campus ambassador for Internshala. I used to be for internshala when into my engineering days. So Okay. if you guys also want to be a part of internshala program, it is quite easy. Get in contact with me. I can hit you with good people over LinkedIn only. Okay. Bhaiya, So campus ambassador yes, yes. program's worth it. See, it is good to show on your profile. Right now, I was during my engineering days or the graduation period, I was a student partner for both IoT also. So, of course, these things help into your enhancement of your CV also. CV में point लिखने के लिए हो जाएगा यार. At least I was a part of the campus ambassador program of good companies only. Don't go for companies that are very new or something. Internshala is a good one. Seco can be another one. LinkedIn के भी आते हैं. Many companies over LinkedIn promote their campus ambassador program. So if you guys are studying right now, see, taking a full-time opportunity or full-time internship would be a hectic choice to go forward to with in the first semester. Look forward to have a campus ambassador program for Udemy or something. We can explore the campus ambassador program. In EDC, we have been exploring this thing. We share the internship programs as well as these kind of programs over the community group. You guys can join. I guess you might have been in the community group right now. So you have seen that many internships pop up over there. We have a habit to share the internship as well as for the BBA students, especially BBA and the BBE. So, whose doubt was this? Am I clear to you, Gaurav? Yes, Bhaiya, you are clear, but I was asking more about the campus ambassador program. What did you have to do in that? And it's Okay, not about as the. a haha. Okay, as they see, if I show you from this perspective also, as a campus ambassador, what your roles and responsibility would look like, it is to share any camp this thing, internal messages as well as their event that they are having. So share in your class group as well as with your friend. Get the participation. Sometimes it looks like getting people onto their webinar and something. So quite a while I have been a part of the campus ambassador program, but it would be quite a helpful journey for you guys to be a part of, learn from the experience, join for few months and have a experience how the corporate world works, because the start their community team would be interacting with you guys, listen to what they talk about, how they talk about. So these kind of stuff can be learned from campus ambassador. See, teaching, learning, all of you guys, 92 people who are on the call, all are attending classroom classes. Okay, this thing, you are attending the classes and all, everyone is doing the same thing. You guys are doing the same kind of courses as well as the internship. अभी third, you guys would be entering into your fourth semester very soon. पता भी नहीं चलता कब निकल जाता है टाइम. फोर्थ सेमेस्टर में आओगे, इंटर्नशिप ले लोगे, इंटर्नशिप लेके फिर उसके बाद यू गाइस सबकी सेम बायोडाटा रहेगा, सेम कोर्सेज, सेम काइंड ऑफ सीजीपीए, सबके ऑनलाइन में 90% ही आएंगे कॉलेज में, ठीक है. देन सेम. So how you guys can differentiate would be about your participation into events, into competitions, getting in contact with these kind of companies as a campus ambassador. So Gaurav, थोड़ा सा आइडिया लगा क्यों these kind of programs are necessary. It would be just to differentiate your profile from the rest of the people. Yeah, Bhaiya, thank you.
Great I insight. just wanted to ask you that being a campus ambassador is same as having being in an internship, or is it a different thing? It is a different thing because in internship, either it would be a part-time or it would be requiring everyday amount of work from you guys. So, in an internship, there would be daily roles and responsibility. Campus ambassador would be a easy-going thing. That is why I told you कि अभी first semester में हो यार you guys. तो अभी you are gelling up with each other as well as you are taking a hold of the college classes and the college subject that are new to you guys. तो अभी don't go for the full-time internship, go for student partner or the campus ambassador program so that you can ये थोड़े से फ्री ऑफ वो रहेंगे यार इट वुड बी नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हफ्ते में एक बार ही टास्क आएगा कि ये चीज शेयर कर दो क्लासरूम के ऊपर दिस इज द वेबिनार दैट वी आर होस्टिंग गेट द पार्टिसिपेशन दीज काइंड ऑफ दिस इज द थिंग दैट यू गाइस कैन अचीव इनटू 1 आवर और मैक्स टू मैक्स हाफ आवर में खत्म हो जाते हैं ठीक है इट विल गिव समथिंग टू टॉक इन recruitment interviews of course so you can share your experience my experience into coming from an MBA this thing interview my interview with got selected into India Mart so my interview lasted till 1 hour 15 minutes to 20 minutes okay so we talked about each and every aspect of my internships what internships I have been a part of we had a huge discussion about my goals as well as what I have done over the online period कि ऑनलाइन में कैसे कोप अप किया व्हाट आई हैव बिल्ट ओवर दिस टाइम तो यू गाइस शुड बी willing to talk about this thing and you won't be getting internship कितनी कर लोगे यार by the time you guys would be applying for internship हर semester में एक भी ली तो चार ठीक है quite a lot बच्चे वो भी नहीं करेंगे चार तो नहीं करेंगे एटलीस्ट दो तो कर ही लोगे आई बिलीव साथ में अगर कोई ना कोई कोर्सेज दैट यू गाइस वुड बी पुटिंग अप ठीक है कोर्सेज हो गए साथ में यू गाइस कैन रजिस्टर फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम वुड बी हेल्पफुल टोटली टोटली वर्थ इट सो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई नहीं पसंद आएगा तो देर इज नो कंपल्शन यार ऑफ कोर्स इफ यू गाइस वोंट बी एबल टू पुट अप द टाइम and being a part of the society biggest point you guys can talk into the recruitment interviews so quite clear on this thing Gaurav, Chirag, who was the other one? Yeah, bhaiya, clear. Clear. Yes. Okay, great. So now next we can move on to this thing. Experience वाला clear हुआ कि यार you guys should write about your description and your education. Okay. So next up we would be heading to. So we have already discussed the headline, how you guys can put on a headline. We have discussed the what are the good headlines. Many people posted over the chat box also. So take a note of that headline also. Chirag posted a very good one. So about your summary, create a summary that tells you about your story. So about what your goals, passion, accomplishment, and your mission to the recruiter. Along with it, your rich experience, a detailed experience that we talked about, ki, internship, student ambassador programs. Write about what you learned from those programs, what your roles and responsibility were. So this kind of stuff you guys can mention over there. Along with that, now we would be discussing about what kind of this thing post as well as what kind of multimedia or what kind of this thing content that you can post over LinkedIn as a part of the LinkedIn community. Okay. Along with that, we would be seeing कि connections कैसे बढ़ाने ठीक है wait a second. Next up, this thing. I want to show you guys this thing. एक ये creator mode अपना on कर लेना ठीक है what creator mode helps you with it gets you with a newsletter and the LinkedIn line यहीं पे creator mode का your on your dashboard only you guys would be seeing this creator mode okay about creator mode में add करने के बाद you guys can mention this thing about your trading these startup these hashtags that you can use as a content and your follower list would be also there okay quite an easy task about your connection once you have built on this thing एक बारी you have feed in your experience your education your profile this thing along with that you guys can mention if you go down into the profile you can mention your skills and endorsement
So about your skills, you can mention I'm good at public speaking, I'm good at MS Office, I'm good at with any development, this thing, the video editing tools or Canva or PowerPoint or something. So next up, write about your skills. These would be, see, एक बारी fundamentally एक बारी बैठ के बना लोगे ना before adding your connection. मैंने अभी तक connections के ऊपर क्यों नहीं किया? Because एक बारी connections बनाने बैठ गए ना, you would be engaged over कि मैं connections बढ़ा लूँ यार पहले. I'm getting this request. I shall add this person. तो उस टाइम के ऊपर टाइम नहीं लगता कि you guys can mention this thing. कि स्किल्स वगैरह ऐड कर लें, प्रोफाइल अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि जो बंदा तुम्हारी प्रोफाइल पे देखेगा कि यार दिस पर्सन हैव बिल्ट अ वेरी गुड प्रोफाइल, आई शुड ऐड हिम. ठीक है. About your recommendation, देखो अभी till date, even you can search your school teachers into this thing, LinkedIn. You would be seeing your school profile also. Schools are quite advanced as well as the teachers of schools are quite advanced. They have a LinkedIn profile. कोई teacher से अच्छा relation था, just ask for a recommendation, because once you get lost in contact from your teachers as well as those people who have worked with, उनसे रिकमेंडेशन नहीं आएगी. अब मैं चाहूँ यार मेरा ये आई डिड एन इंटर्नशिप विद इंडियन ऑयल इन 2019. अब 2022 चल रहा है यार. कैन आई आस्क दैट पर्सन, आई हैव आस्क्ड दैट पर्सन कि मेरा जो प्रोजेक्ट गाइड था कि यार मेरे को गिव मी अ रिकमेंडेशन. So we have to ask for a recommendation from the people. We can search about the person over here. Tell them ki how the working profile looked like. Uh, if I see Medaj also. ठीक है, Medaj is the general secretary of my this thing. So what kind of relationship would be there? He has been reporting directly to me. Select the position. I can select the position as well as I can look forward to this thing, and I can request him to write a recommendation to me. So in this manner, he can write a recommendation and I can feed into my profile. Okay. Similarly, for this thing, if you have your teachers को अपने teachers को you can ping it. अभी इस semester के teachers को तुम लोग ping कर सकते हो once the semester gets over. Yeah, we have worked with you, we have worked on the project as well as to an internship. So just write about your recommendation. It would be a good addition to your profile. रिकमेंडेशन हम LOR वगैरह लिखवाते हैं ना, स्कूल से भी आता है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन एज अ दीज काइंड ऑफ स्टफ यू कैन. और ये दिस इज योर डिजिटल थिंग, तो इट वुड बी स्टेइंग विद यू. अगर LOR वगैरह किस किस को दिखा सकते हैं यार, किसी को स्पेशली सेंड करोगे तभी दिखा पाओगे ना, दिस इज ऑन योर प्रोफाइल. तो रिकमेंडेशन दिस इज अ थिंग दैट अभी आई डोंट एक्सपेक्ट दोज हु आर बिल्डिंग दी लिंक्डइन प्रोफाइल कि उनकी एडिशन होना ही चाहिए. ठीक है, नो वरीज अगर नहीं आ रहा. नाउ अबाउट योर कोर्सेज, ये वाला सेक्शन, ऑल दीज काइंड ऑफ सेक्शंस आर टू बी एडेड फ्रॉम एड सेक्शन ओनली. ठीक है. accomplishment, this would be about your courses that you have done or your test score. किसी ने अभी कोई ना कोई दिया है? अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया है, जेई और समथिंग, जेई नहीं दिया होगा, but some kind of exam you guys would have given, or any olympiad also. अभी you have, I have quite this thing, थोड़ा सा लिंक छूट गया स्कूल की तरफ से. तो बाकी बट क्वाइट ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं स्कूल में. यू हैव योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So of course you can add about your competitive exam publications. Of course I don't think so right now you guys would be having your publication are the research paper. पर इस time पे your teachers would be also encouraging you to write your research paper. Add those kind of research papers also. Uh, Abhi, for the time being, what the best thing would be possible for you? Get into courses. Okay, courses would be, see, some kind of courses would be kind of the subjects you guys are having this semester. Write about your subjects. If the recruiter would be asking you कि अभी तक कौन कौन से subject पढ़े, तो at least you should be having a track about those subjects. तो मैंने अपने college के subject भर दिए यार यहाँ पे. तो मैंने ये MB मेरा 303 मेरे last semester में subject था. पढ़ा है तो यार ऑफ कोर्स मेरे को उसका रिजल्ट मिला, मैंने पेपर दिया, तो आई कैन राइट अबाउट माय कोर्स इन द कोर्स. अगर रिक्रूटर कभी पूछेगा भी अबाउट कि व्हाई यू हैव रिटन दिस थिंग, you can of course say about that we have pursued this thing into our semester, and other than that you can show about your any other courses that you are a part of this thing. कोई ना कोई साइट वगैरह से कहीं पे पेड कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेशन मिली, राइट अबाउट दोज कोर्सेज. So over the year, the thing, जब से मैंने प्रोफाइल बनाई, I have done 33 courses. Write about your projects, जो प्रोजेक्ट अभी कर रहे हो.
ठीक है, दिस सेमेस्टर अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, यू गाइज वुड बी डूइंग योर प्रोजेक्ट्स ओनली। सब लोग प्रोजेक्ट्स ही है ना अभी, किसी के एग्जाम्स वगैरह तो नहीं है, यू गाइज आर डूइंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स एज वेल एज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। नहीं, टेस्ट वेस्ट होते रहते हैं। वो तो यूनिट टेस्ट हो गए ना, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू गाइज नीड टू दिस थिंग गिव योर प्रोजेक्ट्स ओनली। Yeah, we have a Yes, project, got या it. या small या projects, not a big one. तो अपने प्रोजेक्ट्स को कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, हर सब्जेक्ट में कितने, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू यू गाइस हैव? हमारे 9 होते हैं। 7. 7. लाइक ओके 6 7। 8. ओके 6 7 8, ठीक है, वही एवरेज 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट में से आई बिलीव 6 में तो प्रोजेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, 6 8 से प्रोजेक्ट 8 में अगर ही है, अभी 8 में ही है। सब अरे में ही वाह, है, और एक नहीं, 3 3 4 4। लगे रहना भाई। सो ऑन द प्रोजेक्ट सेक्शन यू कैन सी, मैंने अपने सिर्फ नोटेबल प्रोजेक्ट्स लिखे, नॉट दोज थिंग दैट मैंने इधर से उधर से कॉपी करके हुए लिखे होंगे। तो आई हैव रिटन, सो यू गाइस ऑलरेडी यू वुड बी वे ahead ऑफ मी इन दिस सेमेस्टर ओनली। 8 प्रोजेक्ट्स का यू कैन मेक अ ट्रैक ऑफ दिस थिंग। तो जितने प्रोजेक्ट्स लिखोगे, जब कभी कोई इंटरव्यू होगा, यू गाइस कैन लुक फॉरवर्ड टू, यार मेरे को प्रोजेक्ट खोल के नहीं देखना पड़ेगा, आई कैन जस्ट सी कि मैंने तो फाइनेंशियल रिसर्च एनालिसिस में किया था, हाँ अब याद आ गया मैंने उस प्रोजेक्ट में क्या किया था। अब दीज आर द सब्जेक्ट जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाया था, अब जाके मेरे को भी प्रोजेक्ट खोलने पड़ गए थे टू राइट अबाउट माय प्रोजेक्ट इनटू दिस सेक्शन। टू डोंट डू दैट थिंग, कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज राइट अ डिस्क्रिप्शन And आल्सो। after projects that we are making for our subjects हम वो भी ऐड कर सकते हैं, like they are not दीज really दीज big. आर द प्रोजेक्ट्स जो मैंने अपने सब्जेक्ट्स में बनाए थे यार। क्या इनका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता? मैंने अभी नहीं लिखा, यू कैन राइट योर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, बिकॉज यार मैं आई डिड दिस थिंग क्वाइट आफ्टर मेकिंग द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो आई वाज नॉट इन कांटेक्ट विद कि मैंने क्या पूरे प्रोजेक्ट में किया था एंड ऑल। तो भैया अगर लिखोगे इट ये वुड बी अ गुड कोर्सेज में एडिशन। अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं बस। हाँ गौरव, जस्ट अ सेकंड आदित्य, आई वुड बी कमिंग बैक टू यू। गौरव, व्हाट्स योर डाउट? भैया एक बार अपने प्रोजेक्ट्स दिखा दो, मैं बस यही कह रहा था। ओके, दीज आर द प्रोजेक्ट्स यार, दीज आर द प्रोजेक्ट जो मैंने अभी अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के लिए बनाए थे। कोर्सेज कौन से करने चाहिए? श्योरली कोर्सेज के आई हैव ओपन सम ऑफ द रिसोर्सेज, तो कोर्सेज के ऊपर मैं आऊंगा। ये पूछना यस कोर्सेज यस, जैसे आपने लिखे, ये सारे आपने कॉलेज में जो पढ़े सेमेस्टर के अंदर वो है? सी सम ऑफ देम आर फ्रॉम द कॉलेज, दीज जिनके नीचे मैंने वो लिखा हुआ है अबाउट MBZ 303, दिस इज माय थर्ड सेमेस्टर कोर्स। ओके, थर्ड सेमेस्टर जो मैंने कॉलेज में पढ़ा। अदर देन दैट सी प्रोग्रामिंग यूडेमी से करी। भैया एंड कोर्सेज में हम सिर्फ वही लिखे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं वो भी लिखते हैं? आई गेस द कंप्लीटेड वन, क्योंकि यहाँ पे ना यू कैन ऐड योर सर्टिफिकेट ऑल्सो, तो गो फॉर ओके दोज भैया, थिंग। तो भैया अब पता नहीं कॉलेज यार वालों कि को अभी सर्टिफिकेट तो होगा नहीं? क्या चीज? तो कॉलेज में जैसे सब्जेक्ट जो पढ़े हैं हाँ हाँ, उसके तो कोई सर्टिफिकेट होगा नहीं? सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कोर्स में जाएंगे, कोर्स एडिशन करनी है। कोर्स का सब्जेक्ट का नाम बताओ। अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे ना? अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सॉरी, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। अपने सब्जेक्ट का कुछ भी होगा, तुम्हारा BBA 003 हो गया, एसोसिएटेड विद, यू वुड बी एंटरिंग योर दिस थिंग कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था, और फिर उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द सेव। एंड फॉर दिस थिंग, फॉर सर्टिफिकेट कैसे शेयर करना है वो हम पोस्ट से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, यहाँ पे यू कैन राइट योर डिस्क्रिप्शन और योर अबाउट योर कोर्स। तो कोर्स में अब तुम लोगों ने पूछा कि कौन कौन से किस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। अब यार बाहर से यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्किल्स, ऑन योर दिस थिंग, कोई यूडेमी से करा, कोई हंसराज कॉलेज से करा, कोई भी मतलब पेड कोर्सेज, देयर आर क्वाइट मेनी पेड कोर्सेज दैट कम फॉरवर्ड टू, यू कैन सी। सारे सिर्फ वो सेमेस्टर वाले कोर्सेज नहीं, दीज कोर्स मोजो अकेडमी से कर लिया, कुछ फिनलैंडर से कर लिया था, आई डिड इनटू इक्विटी रिसर्च एनालिटिक्स, क्वाइट मेनी यू कैन ऐड, और दिस वुड बी क्वाइट एडिशन वंस यू हैव बिल्ट दिस थिंग। तो सिर्फ एट द एंड क्या ही करना होगा यार, एट द एंड यू हैव टू राइट योर दिस थिंग, कोर्स एडिशन करनी होगी, जस्ट लाइक दैट। टू नॉट अ बिग हैसल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार ही करोगे, फर्स्ट टाइम में हो सकता है दिक्कत आए, नेक्स्ट टाइम से तो इट वुड बी अ हैबिचुअल थिंग। भैया बीटेक के साथ आपको इतना टाइम मिल जाता था? ये बीटेक के साथ नहीं किया है, MBA के साथ किया है। ओके। बीटेक में सीरियस होते तो 33 की जगह 100 ही हो गया तो होता आपने बीटेक भी किया और MBA भी किया है? श्योरली यार, यस।
तो आप So बीटेक के MBA बाद I am एमबीए क्यों doing. करने गए थे? लाइक बीटेक के बाद तो वैसे ही जॉब मिल जाती है। कॉमर्स वाले की बीटेक के जॉब खाने के लिए। नहीं नहीं यार, एग्री में। ऐसा नहीं है, कॉमर्स वालों की भी नहीं है अभी तो वैसे। सो बीटेक के बाद बाय आई गॉट इनटू दिस थिंग सी, मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था बीटेक का, आई इट वेंट थ्रू दिस थिंग। घर आ गए थे हम, और कोविड का लॉकडाउन वगैरह लग गया था इन 2020। माय लास्ट सेमेस्टर एंडेड एट माय होम ओनली। सो आफ्टर दैट आई गॉट एन प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम दिस थिंग यू फेबर एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, एंड दे वांटेड मी टू ट्रैवल टू मुंबई इन अ वीक. So it wasn't possible, so I dropped down this thing. Already gave my CAT exam into my engineering days and got an opportunity to be with you guys in USME. So quite a delight, full journey. COVID gave me this opportunity, so happily took it over here. Of course, wanted to get into this thing. I did it in mechanical engineering, so wanted to get into this computer world. So did business analytics. This was it. भैया कैट स्कोर कितना था? कैट मेरा स्कोर? CAT score 89. ओके. Not big one. I wanted to try again, but लगा कि कोविड में क्या ही करना. Went तो forward कितने with लाने होते हैं USA. कैट में? Good percentile is above 95. अभी से टेंशन मत करो, स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर प्रोफाइल. अभी टेंशन करो कि यार मैं कैट के स्कोर तो ले आऊंगा, बट जब इंटरव्यू में बैठूंगा वहां पे क्या बोलूंगा मैं, वहां पे क्या दिखाने के लिए होगा, क्या मेरा एक्सपीरियंस होगा. स्कूल वाला कोई पूछेगा नहीं. अब तुम्हारी एक लाइफ फ्रेश स्टार्ट से हुई है, कसम से कह रहा हूँ. अबाउट दिस थिंग यू गाइज हैव स्टेप्ड इनटू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड. स्कूल स्कूल वाला वो चला गया टाइम. ठीक है, अब टाइम आ गया है, यू गाइज स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर प्रोफाइल. और ऐसा नहीं है कि डोंट टेक दिस थिंग की नहीं नहीं अब 2 दिन में बना लेनी है सारी प्रोफाइल, बाकी सेमेस्टर ऐश करेंगे. थोड़ा सा टेक केयर ऑफ आउट दिस थिंग, बी विद स्टन. और लिंक्डइन काफी पुश करेगा. हमारे पास लिंक्डइन नहीं होता था बैक इन आर इंजीनियरिंग डेज वगैरह, मतलब हॉस्टल वगैरह में रहते ना, ना वाईफाई होता था ना कुछ, ना पता चलते थे क्या दुनिया कर रही है, ना पता चलता था क्या आस पास वाले लोग कर रहे हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा डिजिटल हो गया, वी आर क्वाइट एक्टिव ओवर लिंक्डइन. हमें पता चलता है कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. मेरे तो कई क्लासमेट्स ऐसे हैं कि सौ कोर्सेज कर करके उन्होंने अपने वो डाल रखे हैं. दे हैव पोस्टेड देयर ऑल द सर्टिफिकेट्स ऑन लिंक्डइन. मैं नहीं डालता, आई जस्ट ऐड इनटू दिस थिंग, कोर्सेज वगैरह में डालती है. क्योंकि क्वाइट अ हैबिट, एवरीवन हैज अ सेपरेट थिंग. अबाउट योर पब्लिकेशंस में अच्छा है इफ यू गाइस गेट योरसेल्फ पब्लिकेटेड विद एनी वेबसाइट और समथिंग. कहीं पे ब्लॉग पोस्ट आउट हुआ है, यू गाइस राइट अ ब्लॉग. हमारी वेबसाइट है यार, इफ यू गाइस सबमिट अ ब्लॉग ओवर टू अस, वी कैन पोस्ट ऑन दिस थिंग कि हम एक ब्लॉग वहां पे रखवा देंगे तुम्हारा. ठीक है, एंड यू कैन ऐड योर दिस थिंग योर, अगर इफ यू सी टाइटल में यू कैन राइट अबाउट योर ब्लॉग, बट द ब्लॉग वॉज जिसके ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग वाला कोई अपना वो बता सकता है कि व्हाट इक्विटीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, स्टॉक मार्केट की टिप्पणी दे दी, कुछ भी. तो वी कैन ऐड योर प्रोफाइल ब्लॉग की, यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज द ब्लॉग लिंक, एज वेल एज राइट अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन की ब्लॉग है क्या. अब कोई भी बंदा जाएगा उसने कोई ब्लॉग देखना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक as well as go into this thing. This is one of the thing I wrote for a Scopus publication. तो मैंने वो लिंक डाल रखा है यार यहाँ पे. सो अलॉन्ग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट में देख सकते हैं अभी. सो अबाउट योर दिस थिंग यू कैन राइट अबाउट योर पेटेंट. अभी मैं नहीं सोच रहा, प्रोजेक्ट्स की हमने बात कर ली, ऑनर एंड अवार्ड, कोई ना कोई अवार्ड या फिर स्कूल से आए हो अभी, तो देर आर क्वाइट मेनी अवार्ड, एल्यूमिनाई अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, हेड टीचर, ये वो जो भी है भर दो इसमें. नो बडी इज आस्किंग फॉर योर प्रूफ, बट एटलीस्ट इट शुड बी ट्रू. ऐसे नहीं कि एकदम से वो हो, बट नो बडी आस्क फॉर द प्रूफ. इंटरव्यूज में भी जाओगे, दिस इज समथिंग आई हैव गिवन एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज टिल डेट. सो अबाउट योर टेस्ट स्कोर अभी कैट तो नहीं दे रखा, बट अगर कोई भी टेस्ट स्कोर दिया हुआ है, क्लास हाईलाइट्स दे 12th रखा है बोर्ड्स, किसी ने. प्रिशा कौन सा? क्लास 12th बोर्ड्स, क्लास 10th बोर्ड्स. यस 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 यस, क्लास 10th एंड एज वेल एज. तो ये तो बहुत जरूरी है, क्लास 10th एंड क्लास 12th के अपने मार्क्स जरूर लिख दो यहाँ पे. ठीक है, अबाउट योर लैंग्वेजेस, थर्ड लैंग्वेज सबकी थी. यस यस. प्रथम तो क्लास 12th की क्या नंबर भी नहीं आएगा? नंबर तो आए हैं, एटलीस्ट नंबर तो लिखो. एंड सेमेस्टर एग्जाम हमने नहीं दिए एमबीए में, पर हम नंबर तो लिखते ही हैं हर जगह. भैया थर्ड लैंग्वेज अगर जो हमने पढ़ी हुई है लिख दी, लेकिन वो याद नहीं है फिर.
क्यों कोई तेरे से वो Same question. अगर संस्कृत है या जर्मन है कोई बुलवाएगा तुमसे और लिमिटेड एटलीस्ट प्रोफिशिएंसी लिख अरे सकते फ्रेंच हैं। हाँ बोल भैया लो तो उसमें लिख वो सकते तो हो। लिमिटेड भैया प्रोफिशिएंसी पढ़ी तो लिख 5 सकते साल हैं। के लिए भैया, लेकिन याद नहीं अब। अरे हाँ तो भाई। कोई दिक्कत नहीं यार एटलीस्ट ये तो हो जाएगा देयर वुड बी एडिशन मैंने संस्कृत पढ़ी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट तो लिखने में भी शर्म आ रही थी यहाँ पे तो दिस इज द थिंग कि लैंग्वेजेस ऐड योर थर्ड लैंग्वेज क्योंकि हो सकता है रिक्रूटर वगैरह दे आस्क फॉर दिस थिंग कि व्हाट वाज योर थर्ड लैंग्वेज और समथिंग कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आएगी डोंट मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी मेंशन कोई इंटरव्यू में घुसते ये नहीं बोलेगा कि जर्मन में ग्रीट करो हमें ठीक है क्लियर ऑन दिस थिंग बाकी आई डोंट यस फील सर। अभी यू गाइज नीड एनीथिंग अदर देन दिस फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट में और कुछ नहीं डालने की जरूरत दिस इज इनफ अलॉन्ग विद दैट अगर कम्युनिटी सर्विस वगैरह है कुछ थ्रू योर सेक्शन यू कैन गो इनटू दिस थिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है सपोर्टेड लैंग्वेज नथिंग टू वरी अबाउट तो ये हो गया तुम्हारी बेसिक प्रोफाइल का एक ओवरव्यू यू गाइज वांट कि एक बारी जल्दी से गो थ्रू करें हम लोग कि एंड आई गेस यू गाइज आर सिटिंग विद अ पेन एंड पेपर आल्सो या फिर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के बैठे होगे जो जो चीजें मैंने बताई हैं तुम कहीं हो सकता है कि ढूंढते रहते हो अब जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है कैसे चेंज करना है वगैरह दीज आर द थिंग प्रोफाइल पिक्चर वगैरह की बात हो गई भैया आपने जैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल ऐड करा हुआ है, ये कैसे करना है? ओके दिस थिंग यहाँ पे जब एक्सपीरियंस में ऐड करोगे योर दिस वुड बी माय लेटेस्ट प्रोफाइल मतलब आई एम करेंटली वर्किंग विद दिस रोल जस्ट टेक ऑन दिस थिंग कोई भी अगर सोसाइटी है या फिर यूर स्टडिंग समवेयर तो मैंने अब जैसे ये इनकी इसके ऊपर लिखा हुआ सॉरी तो हाँ तो आई एम करेंटली वर्किंग ऑन दिस रोल तो ये रोल की वहां के ऊपर ऐड हो जाएगा दिस थिंग ये यहाँ पे फर्स्ट थिंग वुड बी दिस थिंग एंड 2022 तक आई हैव मेंशन कि आई एम स्टडिंग इनटू यूएसएमई तो ये चीज भी वहां पे आएगी अदर देन दैट अगर जस्ट इसमें से भी देखना है करंट पोजीशन यू कैन मेंशन अभी यहाँ पे मेरी दो करंट पोजीशन अगर मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर लिख देता हूँ तो दिस थिंग वुड बी डिस्प्लेड ऑन माय करंट पोजीशन तो ये शो करंट कंपनी इन माय इंट्रो तो ये इंट्रो में हमारी कंपनी आ गई भैया ये दो कैसे आ गए मतलब ईडीसी और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट वाला दिस इज व्हाट आई एम स्टडिंग राइट नाउ तो मैंने वो नीचे में डाल रखा है एजुकेशन में डाल रखा है माय लेटेस्ट एजुकेशन पहले मैं भारतीय विद्यापीठ से पास आउट था नाउ आई एम इनटू यूएसएमई तो भैया ये ये भी मेंशन इंडस्ट्री में क्या डालना है? ये नहीं दोनों समझ डाल आया। सकते हैं आप जैसे पहले ये कहाँ से था एजुकेशन के बिल्कुल ऊपर इंडस्ट्री। यस यस कुछ भी डाल सकते हो यार इंडस्ट्री में अबाउट योर फाइनेंस इंडस्ट्री लिखनी है मेरी माय दिस थिंग द कंपनी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल इज एन ऑनलाइन मीडिया सो आई हैव रिटन ऑनलाइन मीडिया इनटू इट अगर तुम लोगों ने इंडस्ट्री नहीं भी लिखना कीप इट दिस थिंग बिना खाली छोड़ दो इंडस्ट्री के ले नहीं रहा ना भैया वो। अच्छा हाँ भैया वो नहीं खाली रहे नहीं जाता। हाँ बे बट ले नहीं ये रहा वो कुछ। बट ये कहीं पे दिखता नहीं है यार इफ यू सी ऑनलाइन मीडिया कहीं पे लिखा नहीं आ रहा तो ऐड फाइनेंस तुम मैनेजमेंट की हो तो मैनेजमेंट ऐड कर दो मैनेजमेंट में नहीं आ रहा क्या मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर दो अब मैं अगर मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी कर देता हूँ कोई फर्क आया यहाँ पे प्रोफाइल में नहीं आया। नहीं आया ना तो वही है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो ये दिस इज द थिंग कि प्रोफाइल के ऊपर नहीं शो होने वाली द मेन थिंग दैट वुड बी शोन ऑन योर प्रोफाइल और बहुत अच्छा लगता है ये देख के मतलब whenever someone opens they see this is the entrepreneurship development cell I'm working with these organization so it gives a good impression of course so about your education and of course take this thing show my current position in my intro this is your intro thing तो यहाँ पे ये इंट्रो वाला सेक्शन हो गया पूरा जब तुम लोग खोलोगे तो ऑफकोर्स यू वॉन्ट बी सेइंग दिस ओपन टू वर्क एंड ऑल और अगर थोड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर में यू वांट टू ऐड योर फ्रेम about this thing open to work if you're looking forward to have an internship or something you can mention open to work तो जस्ट अ गिमिक थिंग है ये जैसे फेसबुक वगैरह के ऊपर वो मैच के टाइम पे वो हो जाता था ना हमारा वो इंडिया का सिंबल वगैरह आ जाता था जस्ट अ गिमिक थिंग keep it original my personal advice keep it original और for the time being if you are looking forward to have an internship very soon कि internship अभी जल्दी से मिल जाए open to work में डाल दो कोई और डाउट इसके अंदर इंट्रो सेक्शन में एक एक सेक्शन लेके चलते हैं अब हम भैया आपने मतलब एंटरप्रेन्योर क्यों लिखा हुआ है मतलब किस बेसिस पे
Yeah, actually, I'm working on two startups right now. So one is into performance healthcare supplements, as well as other one is into EV startup. So I'm currently working on those two also. So इसलिए मैंने entrepreneur लिखा हुआ है, and healthcare is something that I relate to very much. COVID gave us, all of us, some kind of time, free time to focus on our healthcare as well as on our fitness. So quite engrossed into healthcare also. तो किसी को डाइट प्लान वगैरह चाहिए हो, कैन पिंग मी ओवर लिंक्डइन ऑल्सो. ओके भैया. ठीक है. तो यू एक गाइस कैन ऑल्सो डाउट राइट, ये जरूर लिखो. हाँ Yeah. चिरा. लाइक ये लिंक्डइन प्रोफाइल पे आता है ना फर्स्ट एंड ऑल, तो वो कैसे आता है? जैसे आपकी प्रोफाइल पे आता है अमित सचदेवा फर्स्ट. अमित सचदेवा फर्स्ट. एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. कहाँ पे वो लिखा आ रहा आई था भाई? गेस हम जितना ज्यादा प्रोफाइल When को you search एनहांस करते someone, जाते हैं वो आता जाता है. थर्ड, when सेकंड, you प्रोफाइल फर्स्ट. बिल्डिंग के ऊपर या तो आता है वो. First is direct connection, na basically. यहाँ पे सर्च करने के ऊपर आ रहा है क्या? यस यस. हाँ भैया. वो तो किसी का भी अगर नाम करोगे तन्मय अरोड़ा कहते हैं तो, अच्छा ये दिस थिंग फर्स्ट सेकंड. अच्छा, दिस इज समथिंग दैट दे आर दिस थिंग. ये शायद से हमारे कनेक्शंस का है. यस, फर्स्ट ये रहता है, ये हमारे डायरेक्ट कनेक्शन है. ठीक है, these all people are my direct connection. और सेकंड में होता है आई गेस दिस इज व्हाट देयर इन्वेस्टर और समथिंग, और ये इनके फॉरवर्ड कनेक्शन में है. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोचने की जरूरत. ठीक है, आई गेस क्लियर ऑन दिस थिंग. ये वाली चीज भैया हो गई हमारा एक सेक्शन. भैया आपके स्किल्स में वो एमएस ऑफिस के नीचे लिखा हुआ था लिंक्डइन स्किल असेसमेंट बैच. मैं आ रहा हूँ यार, नीचे आ रहा हूँ, उसी के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अप. जस्ट अ सेकंड यार. सॉरी. ओके, नेक्स्ट थिंग. अब थोड़ा सा हम शैल वी सी कि पहले व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट वी कैन. चलो पोस्ट के ऊपर इसके बाद ही आएंगे. ये एक तुम्हारा एक्टिविटी सेक्शन आ जाता है. ठीक है, एक्टिविटी और पोस्ट वाली चीज साथ में ही देखेंगे. व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट वी कैन डू. मैं अपने शुरू के लिए पोस्ट दिखा दूंगा कि क्या क्या पोस्ट डाले थे. एक्सपीरियंस में किसी को डाउट ऐड करने में, एक्सपीरियंस कुछ जो भी डालना हो तुम लोगों ने यहाँ पे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, करंट पोजीशन, They are हेडलाइन. the most basic. Most of us knew it already, but still, thank you. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. तो एक्सपीरियंस इज क्लियर, एजुकेशन ऐड करना आ गया. अबाउट दिस लिंक्डइन स्किल असेसमेंट दिस थिंग बैच, इसका क्या है? इसका ये है, टेक अ स्किल क्विज जब करोगे. इफ यू गाइस गो इनटू टेक अ स्किल क्विज, कैन टेक फॉर एनीवन दिस थिंग. MySQL, Python, HTML, नॉलेज इंडस्ट्री, सर्च अबाउट दिस थिंग कि कहाँ पे लेना है. फाइनेंस में लेना, फाइनेंशियल स्टफ में लेना है. फाइनेंस के अंदर आई गेस नहीं है, साइबर सिक्योरिटी में है, नॉलेज इंडस्ट्री, मशीन लर्निंग. दीज आर सॉफ्टवेयर बेसिस पे अगर कोई ना कोई टूल वगैरह यू गाइस आर गुड विथ. अब जैसे मैंने यहाँ पे आई वर्कड ऑन दिस थिंग, आई गेव एन स्किल असेसमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. सो इट गेव मी अ बैच की हाँ ये वाला बैच आई अचीव्ड इट. नथिंग टू वरी अबाउट. नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अच्छा. ठीक है, क्लियर? किसका क्वेश्चन था ये? मेरा था भैया देखिए. Okay. So, quite a thing. You can explore any new skill set that you can add as well as look forward to it. Recommendations वाली चीज क्लियर हो गई थी. अपनी टीचर्स वगैरह को भेज सकते हो टिल डेट. नहीं भी आता तो नथिंग टू वरी अबाउट. ये अभी के लिए जरूरी नहीं है. वंस यू गेट ओवर विद दिस सेमेस्टर, अपनी सारे टीचर्स को भेज दो. बेस्ट थिंग पॉसिबल. We have this thing. This was my professor from last semester. I gave him this thing. The कि मेरे को एक वो चाहिए, recommendation चाहिए. Please add this thing. So he has given me a good recommendation. और जब recruiter आएगा, he would be seeing this kind of recommendation what the other teacher or some notable people, founder or someone has written about me. So it would be a good addition. Courses, project, language, publication. इसमें कहीं पे दिक्कत है accomplishments में? No, bhaiya. Clear. Other people can also mention कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. So asking for a recommendation from our teachers will just give us an add-on for our LinkedIn profile, right? Yes. Of course, it would be enhancing your this thing relation with your teacher.
जब टीचर बोलेगा यार some good words, you would be having some respect. हाँ चलो अच्छी बात है, कर दिया recommendation. ठीक है. About this thing, about your interest, interest के लिए क्या करना है? जो भी पेजेस वगैरह हैं, यू गाइज वुड बी फॉलोइंग बिल गेट्स वगैरह को फॉलो कर सकते हो, एनी पीपल कंपनीज को जो जो फॉलो करोगे, आई फॉलोड पीडब्ल्यूसी और सम स्टार्टअप्स आल्सो, तो मेंशन इट वुड बी शोन ऑन दिस ईयर इंटर्स. अब चलते हैं ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट योर एक्टिविटी सेक्शन, क्योंकि दिस थिंग वुड बी विजिबल ऑन योर प्रोफाइल. ओके, सो एक्टिविटी सेक्शन में क्या क्या आता है, बाकी सारा क्लियर हो गया ना? कैन वी मूव ऑन टू दिस थिंग? Yes. Yes. Okay, great, great. सो अबाउट योर एक्टिविटी सेक्शन, ऑल एक्टिविटीज में आएगा तुम लोगों ने जो जो चीजें लाइक करी, किसी का पोस्ट वगैरह लाइक किया. देयर आर पीपल ऑन टू दिस थिंग लिंक्डइन दैट पोस्ट और स्ट्रीक. दीज गाइज हैव बीन पोस्टिंग अबाउट 100 days पोस्ट, मतलब हर 100 दिन लगातार पोस्ट करना अबाउट क्रिप्टो बिलियनियर्स, एज वेल एज ही इज डूइंग अबाउट क्रिप्टो बिलियनियर्स. अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज बिग इनटू क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल. So, of course, he is coming on board also in February to give a talk session on this thing. Quite an interesting one for you all. So, they talk about this thing. This is something I post about this thing. You can like about. These are the people. This was the thing I was telling you about. Tanisha, a teammate of ours, heading the this in the content department, she her article was posted somewhere in Times, D2 Times. Okay, so I wrote about great work, congratulations. So अब जो ये चीज करी है, अब you guys would be visiting to my profile or you are into my connection, you guys would be seeing her post also. तो इसी तरीके से रीच बढ़ती है. तो फॉर दिस थिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑन टू दिस थिंग कि डोंट लीव द लिंक्डइन वाला जो ग्रुप अभी हमने व्हाट्सएप बना रखा है. आई एम इनवाइटिंग अ प्रोफेशनल, ही इज द फाउंडर ऑफ क्रीक. नेक्स्ट वीक ही वुड बी गिविंग यू टिप्स. अभी वी हैव डिस्कस, हमने फंडामेंटल्स डिस्कस कर लिए, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपनी डिटेल्स कैसे भरनी है. नेक्स्ट वीक व्हेन ही वुड बी कमिंग, वो बताएंगे किस तरीके से पोस्ट करना है एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक पोस्ट एंड योर व्यूज ओवर योर दिस थिंग. तो ऑल एक्टिविटीज वाली चीज पता चल गई होगी. अब आर्टिकल जो मैं पोस्ट आउट करता हूँ, या फिर दिस वाज एन आर्टिकल दैट आई पोस्टेड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बैक, तो 2020 में करा था. दिस थिंग अबाउट माय यूट्यूब वीडियो था ये, बट something not related to LinkedIn. One of my mistake that I did in my starting days on LinkedIn. So don't do this thing. Keep it professional, of course. Along with it, जब तुम पोस्ट करोगे, you would be seeing your views onto a post. और व्यूज कैसे बढ़ेंगे? अगर यहाँ पे कमेंट आएगा किसी का, सिमिलरली दे वुड बी पोस्टिंग उनके कनेक्शंस में, दिस पोस्ट वुड बी सीन इन देयर फीड. तो फीड जो होती है नॉर्मल इंस्टाग्राम फीड होती है, जो लिंक्डइन फीड होती है. तो ऑन दिस थिंग, ये अभी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारे नहीं भी आ रही होगी, तो लुक फॉरवर्ड टू हैव अ लुक एट द पोस्ट. रीच वगैरह के लिए हमने नेक्स्ट वीक स्पेशल सेशन रखा है फॉर योर रीच, हाउ यू कैन इंगेज विद मोर रिक्रूटर्स ऑल्सो. अभी पीछे किसी ने न्यूज वगैरह, गूगल न्यूज वगैरह में देखा होगा कि बच्चों ने क्रीक के फाउंडर को टैग करके दे पोस्टेड अबाउट, किसी ने देखा वो क्रीक की अपनी नई दिस ग्राफिक एडिटिंग की वो थी, एन एड थी, और वो लड़के ने बनाई एंड ही पोस्टेड ओवर द क्लीक प्लेटफॉर्म की आई टैग्ड हिम, द कुणाल शो को टैग बैक किया एंड ही लैंडेड अ दिस थिंग इंटर्नशिप इनटू क्रीक. एनीवन अवेयर अबाउट दैट थिंग? नो वरी. ठीक है, I would be showing you कि how LinkedIn is quite a powerful tool that we can use. So start with this thing. I have posted this thing. If you guys share someone amazing opportunity and share with many people about your achievements. Other than that, but you can right now you guys can add into this thing about your internship or your any certificate that you have achieved. इस चीज का with this thing tagging that organization, इन चीजों से you can add on to this thing. Along with it कोई एग्जाम का वो था, your 12th certificate or your CV also. So this was the thing I was asking for a summer internship opportunity. Quite an interesting one. So I wrote about my specialization
about my background coming in, I'm currently looking for a summer internship opportunity in the field of finance, equity research, operation, and data analytics. So if you want, you guys can take a look, copy कर लो, कोई दिक्कत नहीं. तो attach your CV with it. So I got 21 comments. अब ये comment क्यों है? अब ये आए कमेंटिंग फॉर अ बेटर रीच. इस बंदे ने कमेंट किया इसकी प्रोफाइल के ऊपर मेरा ये कि इस बंदे ने ये कमेंट किया इसलिए ये कमेंट आएगा. Many of my friends commented on the same thing, commenting for a better reach. अगर यहाँ पे कमेंट लिखना चालू भी करते हैं ना, इट शोज लाइक कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी और कमेंटिंग फॉर अ बेटर रीच. सो सम ऑफ द पीपल डिड दिस थिंग. कुछ रिक्रूटर्स की मेल आई कि they will send your CV over the mail. Someone messaged me कि you can get in contact with this recruiter. So almost this way you can land up with, and you can see normal post के ऊपर जहाँ पे comments नहीं थे there were just 194 views, और जहाँ पे 21 comment हो गए वहाँ पे 2500 views थे. So 2500 of profiles that saw my this thing resume and all, and quite a good result I got. क्लियर ऑन दिस थिंग कि कैसे पोस्ट कर सकते हैं एंड हाउ टू गेट अ रीच. मैंने अभी डेमो दी है. देयर आर मोर टेक्निकलिटीज इनटू दिस थिंग कि कैसे हम रीच बढ़ा सकते हैं अपने अबाउट द पोस्ट. तो वुड बी कमिंग ऑन दैट थिंग इन द नेक्स्ट वेबिनार ऑन नेक्स्ट संडे और सैटरडे. वी वुड बी इन्फॉर्मिंग यू गाइस. अदर देन दैट, ये चीज क्लियर हुई अबाउट द लिंक्डइन प्रोफाइल? क्लियर है भैया. ग्रेट. क्लियर है भैया. To start with this thing, I'm looking forward to connect with you all as well as build this thing. तुम्हारे connections और about your connections. आप connections कैसे ऐड करना है? We look forward to that thing also. सबको अपने कॉलेज का नाम तो पता ही है ना पूरा? यस यस. थोड़ा सा ठीक है. गुड. उनका पेज भी है फिर. ठीक है, पेज में जाओ. बेस्ट टाइम पॉसिबल you guys can go into the alumni section. थोड़े टाइम में हम भी alumni होने वाले in just few months. At this thing, quite many people are here. Those are working at Deloitte, Mercedes-Benz, BTech graduates, City में है, fashion management. There are quite a many people. Stanislas is a person, digital marketing specialist. Get connected with these people. Uh, ऑफ कोर्स दे वुड बी गिविंग यू अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. दे वुड बी सेइंग कि तुम भी सेम कॉलेज से आ रहे हो, हम भी सेम कॉलेज के, चलो कनेक्ट तो कर ही लेते हैं. दीज गाइज वुड बी द मोस्ट पीपल जहाँ पे एक्सेप्टेंस है तो सबसे ज्यादा 99% इन लोगों ने एक्सेप्ट करना ही करना है. और इसमें कई लोग हैं जो आईएम्स वगैरह पहुंच गए. नेक्स्ट अप, तो कनेक्शंस बिल्डअप करना जस्ट लाइक सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. Want to search for any person also, you can search for any person over here. कंपनी नाउ, अगर तुम लोगों को आया है किसी कंपनी का, आई डिड एंड दिस थिंग, मैंने सेफ एक्सप्रेस में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम कर रखा. इफ आई वांट टू, मेरे को कि यहाँ पे सेफ एक्सप्रेस के लोगों के, मतलब आई नीड टू कनेक्ट विद सेफ एक्सप्रेस पीपल. आई नीड कनेक्शन विद देम. कि एचआर मैनेजर, यहाँ पे मेरे को किसी एक एचआर से कनेक्ट करना है, एंड सो दैट आई कैन सेंड हर दी माय रिज्यूमे और अ कनेक्शन रिक्वेस्ट और आस्क फॉर कोई अगर ओपन अपॉर्चुनिटी है या नहीं. ठीक है, जस्ट सेंड आउट अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, ऐड अ नोट. ऐड अ नोट में क्या होता है, इफ आई सेंड फेसबुक पे देखा कई बार, इफ वी एक्सेप्ट समवन रिक्वेस्ट इमीडिएटली मैसेज पॉप होता है मैसेंजर के ऊपर. नीड अ यस और नो ऑन दिस थिंग? यस भैया. ठीक है, तो सिमिलरली जब सुरुचि बलाल मैम वुड बी एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, जो ये मैसेज यहाँ पे मैंने लिखा होगा. डैट मैम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन इंटर्नशिप विद योर renowned this thing organization, as well as I'm open to work for this from this period to this period. You can write this thing. और अगर नहीं भी लिखना, just send out a connection request. You would be this thing, you would be notified that she has accepted your request. फिर उसके आप मैसेज कर देना. अब जो कनेक्शन में होगा, विनीत गुप्ता सर, ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, तो उनको ही इज इनटू माय कनेक्शन, तो उनको मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ ऑलरेडी. कनेक्शन रिक्वेस्ट और मैसेज डायरेक्ट भेज सकता हूँ. तो इन दिस वे लिंक्डइन इज अ क्वाइट अ पावरफुल टूल, और कोई भी कंपनी मिल जाएगी यहाँ पे. ठीक है, क्लियर ऑन दिस थिंग? लिंक्डइन की किसी ने और कोई पॉइंट क्लैरिफाई करना हो,
about LinkedIn? Anything? As you mentioned earlier, if anyone wants to volunteer to show their profile. Surely we would be coming to that thing. एक बारी we would be ending with the CV. तुम लोगों का CV की enhancement के बारे में बता दूं. Then in the And last also 5 minutes, about the courses. You tell me courses, about yes. courses. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग. अब लिंक्डइन के ऊपर जो हमारी चीजें बचती हैं, इट इज अबाउट योर complete and enhance your personal profile. I have told you enough to work on your LinkedIn profile. Join 2 to 3 relevant groups. Be a part of those groups that you can relate with. किसी को PR चाहिए, you want further education, abroad जाना, be a part of that peer group over this thing. Connect and grow your network. Connect with your recruiters, HRs वगैरह के साथ अभी जितना कनेक्ट कर लो, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर भी एक दिन में यू कैन मैक्सिमम सेंड इट. In the earlier days, it was around 30 connections requests you can send in a particular day. To 30 compounding effect. You guys are coming for a commerce background. तुम लोगों को पता है compounding क्या होता है. तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाएगा कि 25-25 हर दिन में करना ही करना है यार एटलीस्ट यू कैन. और ये जो एड अ नोट वाला सेक्शन था इन योर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हुए, जो एड अ नोट है, एक ही एड अ नोट कर लो, कॉपी पेस्ट करते रहना हर जगह. हर बारी नया एड अ नोट करने की जरूरत ही नहीं. बैक इन माई डेज व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर ए इंटर्नशिप, हर एक रिक्रूटर को सेम मैसेज आता था मेरी तरफ से. तो डू दिस थिंग कि एक अच्छे से एक ही मैसेज पे अच्छे से मेहनत कर लो and have a message ready with you so that you can, once the recruiter connects with you, just send out the message. फिर उसके बाद share your resume, your thoughts in about your news thoughts. Twitter वाली चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं. Share your news thought or you started with any organization or your this thing societies वगैरह के साथ किए, society के post share करो. At least it would be getting you the traction as well as the views that you require in the starting. ठीक है, start building through this thing. अब I believe you guys have, किसी को यहाँ पे any doubt or want to pinpoint anything, the stage is open for you guys always. Okay, shall I move forward? Yeah, Yes, भैया. yeah. Yes, Okay, भैया. Yes, भैया. great. So about your CV, what CV should look like? अभी तक सब लोगों की, I guess, अभी there were one when we were doing the recruitment for our society, there were quite a this thing fuzz about कि हमने अभी CV नहीं बनाया है. Am I right? अभी तक कई लोग के CV नहीं है. Yes, भैया. अब after this thing, work on this thing by next weekend. टेक अ टारगेट कि अब तो नेक्स्ट वीकेंड तक हमने लिंक्डइन प्रोफाइल एंड द सीवी बिल्ड कर ही लेना है. ठीक है. टू कमिंग टू योर सीवी. सीवी हमने डिजिटल सीवी के बारे में बात कर ली, हमने ऑनलाइन सीवी के बारे में बात कर ली, लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में ऑफ कोर्स. अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रोफाइल हट के, दैट वी वुड बी यूजिंग टू सेंड आउट थ्रू मेल. मेल में लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक लगा दोगे तो कोई खोलेगा नहीं. ठीक है. मेल में एक हार्ड कॉपी और सीवी भेजना बहुत जरूरी. यू गाइस एग्री विद मी कि लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भेजोगे तो वो बंदा खोलेगा, या नॉर्मल एक पीडीएफ भेजोगे सीवी बना के वो खोलेगा? पीडीएफ PDF खोलेगा. PDF, obviously. ऑब्वियसली. सो अब लिंक्डइन की अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम सीवी में क्या क्या डालना है. सीवी में तुम लोगों का एक टिपिकल जर्नल, मैं ऑन अ हर्ड बेसिस कह रहा हूँ कि तुम लोगों का व्हाट वुड बी द सीवी वुड बी लुकिंग लाइक. तो सीवी में क्या क्या आएगा तुम्हारे. ठीक है. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एज वेल एज व्हाट यू हैव स्टडीड टिल डेट. तुम्हारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी सबसे पहले ऊपर. अबाउट योर कि मेरा नाम ये है, यो इधर योर फोटोग्राफ ऑल्सो. फोटोग्राफ आ सकती है साथ में, क्योंकि सीवी वुड बी योर फोर फ्रंट. तुम्हारी शक्ल नहीं जानी मेल के ऊपर. योर एटीट्यूड इज नॉट बीइंग शोड ओवर द मेल. योर सीवी इज द ओनली एटीट्यूड यू कैन शो ओवर द मेल. सो प्रोफेशनल एक्विजिशन, योर लैंग्वेजेस, your training and courses that you have taken part into. अब हम एक जर्नल सीवी के बारे में बात करें. what are the sections as well as what you guys have to include. तो फर्स्ट एक जनरल सिनेरियो once I show you the CV, उस हिसाब से देखेंगे. सो सीवी का आई गेस
वन थिंग दैट यू गाइस, और मेरे को भी ये बड़ा वो हुआ था इन द स्टार्टिंग कि सीवी का यार करेक्ट फॉर्मेट क्या है। हर बारी ऑनलाइन जाते हैं, वी सी हंड्रेड्स ऑफ सीवी फॉर्मेट, हंड्रेड ऑफ वेबसाइट्स टू क्रिएट दी सीवी फॉर्मेट, और वो सीवी जब उसके ऊपर सारा फीड कर लोगे, ही वुड बी आस्किंग कि ही वुड बी आस्किंग टू यू पे फॉर समथिंग कि $10 $15 पे करो, देन यू कैन डाउनलोड योर सीवी। कोई दिक्कत नहीं है अबाउट योर सीवीज। सीवी का फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी ऊपर, अबाउट योर पर्सनल स्टेटमेंट, अबाउट योर जस्ट अ समरी व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हॉबीज वगैरह नहीं लिखनी वहां पे ऊपर, वो हॉबीज वगैरह का सब सेक्शन अलग है। देन योर वर्क एक्सपीरियंस और योर एजुकेशन, ठीक है, एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेशन, एजुकेशन, स्किल्स एंड द एक्स्ट्रा सेक्शन। So directly we jump into this thing. Being a part of the TNP department, I can say तुम लोगों को भी ये एक जनरल फॉर्मेट मिलेगा अबाउट योर सीवी, जो हमारे कॉलेज का एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मेट मिलेगा ही मिलेगा। यू जस्ट नीड टू फीड इन योर डिटेल्स इनटू दिस थिंग कि अभी तक व्हाट आर द डिटेल्स। तो सिमिलर अब फॉर्मेट वाला सेक्शन तो क्लियर हो गया ना, एटलीस्ट फॉर्मेट की दिस थिंग कंफ्यूजन जो थी। अब तो हमें कॉलेज वाला फॉर्मेट में ही, एंड किसी भी अगर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप ओनली, यही फॉर्मेट जाएगा वहां पे। क्लियर ऑन दिस थिंग? हो सकता है अभी तुम्हारे लिए बीबीए, दिस इज फॉर एमबीए पीपल, तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इट वुड बी रिटन एज the same bachelor's into business administration, BBE, bachelor's in economics, और your this thing, और यहाँ पे your personal details का section there would be, just a second, sorry, ठीक है, clear guys? Yes, Tell भैया. me this thing, अभी तक सेक्शन ये मिल गया तुम्हें, फॉर्मेट मिल चुका है अभी तक this thing? No, not yet. You would be getting it in no time, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिला अपने टीएनपी कोऑर्डिनेटर्स को बोल दो कि जस्ट प्रोवाइड अस विद दिस थिंग, दे मेरे को ये चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, सो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग। अचीवमेंट, योर एजुकेशन, ऊपर के दो कम कर दो, नहीं एक कम कर दो ऑफ कोर्स, तो सिर्फ ऊपर का एक एमबीए वाला हटा दो। दिस मच यू गाइस हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अपना बीबी दिस थिंग, बीबी ए का लिख दो, स्टार्टिंग इन फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे मैंने स्टार्टिंग इन सेमेस्टर फोर्थ लिखा, तो यू कैन राइट अबाउट दिस थिंग कि आई एम स्टार्टिंग इन फर्स्ट सेमेस्टर, 12th पास हो गई है, 10th पास हो गई है, मेंशन योर सीजीपीए और दी परसेंटाइल। अचीवमेंट्स हमारे पास है, वर्क एक्सपीरियंस सिमिलर बेसिस के ऊपर, जैसे आई शेयर द फॉर्मेट ऑन दी, ओके गुड मेरेज। So already you guys have the format, but मेरेज is this the perfect one जो अभी currently चल रहा है, जो टीएनपी ने प्रोवाइड किया है? I got this from the TNP memo only. I don't know if it's the latest one. पर इस साल का अगर अलग हुआ तो these guys would be have in a headache. तो guys, we would be confirming this thing for you guys कि if this is the latest one and start working with it, we would be posting that again. ठीक है? Great. और क्योंकि टीएनपी का है, these kind of stuff should be quite confidential as well as very professionally, क्योंकि एक ही बारी बनता है सीवी ढंग से, एक बारी मेहनत कर ले। तो अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सेक्शंस ऐसे ही रहेंगे। आई गेस नथिंग टू बी एक्सप्लेन अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टफ कि पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशंस ये होगी इफ यू हैव मैनेज एनी टीम, कॉलेज में, स्कूल में, इफ यू वर हेड प्रेसिडेंट दिस थिंग, और हेड कैप्टन ऑफ एनी टीम, जोनल्स में गए, led a team of this thing into this thing, so mention about your position of responsibilities. Okay, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पे? This was a Yes. term that, So हाँ I हाँ have a बताओ। doubt. If we already have a CV made, then do we need to use that or this under the college head for ओके, applying? कॉलेज में ये वाला सीवी चलेगा। इफ यू ऑलरेडी हैव अ सीवी, सी आई शो यू दिस थिंग, मैंने अपने दोनों सीवी खोल के रखे हुए थे। आई हैव माय अदर सीवी आल्सो, जो मेरा बहुत पहले का है। आई हैव बीन अप्लाइंग थ्रू दिस थिंग DTU 1 ओनली, so this is my normal CV, but if you see I have made this one also just for the purpose that I can apply on campus opportunity. DTU का लोगो होना जरूरी है, ठीक है? Okay, thank you.
तो you should work on this thing once you get the correct format. Okay. और भी और किसी को डाउट? अगर हम लोग कहीं बाहर के लिए अप्लाई करेंगे कहीं और कंपनी के लिए बाहर से ऑफ कैंपस तो वहां पे हम लोग अपना सीवी डालेंगे या फिर ये जीटीयू वाला? Either you can use any one of them. कंटेंट तो सेम ही है. रिक्रूटर ने तुम्हारे एनी रिक्रूटर इट गोज इनटू दिस थिंग, वो टेक्निकलिटीज में जाते हैं. इट डजंट गोज कि ऐसे कोई भी. अगर एक और चीज है, अगर तुम लोगों को इफ यू वांट दिस थिंग, you can make your CV from LinkedIn also. If I show you this thing, just a second. तो LinkedIn भी हमें एक CV का फॉर्मेट देता है. तो मैं वही कह रहा हूँ, फॉर्मेट की भरमार है इस ऑनलाइन में. मतलब देर अब यहाँ पे मेरे सारे एक्सपीरियंस आ गए, समरी आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, द सेम थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड इन दिस थिंग मेरे दूसरे CV में, सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ. बट अब ये फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं है बिकॉज ज्यादा बड़ा हो गया. CV should be at this moment just 1 or 2 pages. मिनिमम ग्राउंड रूल ये है. और फॉर दिस थिंग अगर तुम इस वाले CV से भी अप्लाई कर रहे हो ऑफ कैंपस Bhaiya, from अपॉर्चुनिटी में, where कोई did you मना नहीं access करेगा. this LinkedIn CV? ओके, लिंक्डइन CV के लिए यू वेंट इनटू दिस थिंग मोर, शेयर प्रोफाइल इन मैसेज, दिस इज समथिंग नॉट रेलेवेंट. दिस थिंग बिल्डर रिज्यूमे में नहीं जाना, सेव टू PDF. और बिल्डर रिज्यूमे में भी जाना है, यू कैन दिस थिंग अपना यहाँ पे भी डाल के कर सकते हो. आई एम नॉट Create वर्कड from ऑन दिस profile. थिंग. Yes, create for profile. This kind of CV would be you would be getting. तो दो, पर ये भी अच्छा नहीं है उतना because it is not showing you. क्योंकि यहाँ पे जब तक पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन सारी नहीं डली होगी तब तक यहाँ पे गलत ही आएगा CV. तो मेरे यहाँ पे 10th और 12th के मार्क्स नहीं डले हुए, तो इट इज नॉट शोइंग माय 10th एंड 12th मार्क्स और MBA मार्क्स और द BTech वन. ठीक है. Bhaiya, you can add those on LinkedIn, na? You can I add. could have added, but I have already have 3 this thing resumes with me, so I don't have to boast about my marks over this thing. But you guys don't have this thing. मेरा IELTS का एग्जाम का है, तो I can add about those IELTS exam as well as the CAT exam. तो इनके मैं ऐड करूंगा as compared to this thing 12th और 10th के. ठीक है. क्योंकि ये तो अब सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ की तरह हो जाता है यार. एट टिल माई स्टेज नोबडी आस्क फॉर दिस थिंग, जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चले जाते हैं कि 75% अबव होने चाहिए. नोबडी वुड बी आस्किंग, MBA तक आते होते तो नोबडी वुड आस्क फॉर योर मार्क्स और समथिंग. ठीक है. तो अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलम, दिस इज द सेक्शन जिसको तुम लोग भर सकते हो. ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ क्रॉस चेक. जब TNP में यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, दे वुड बी आस्किंग फॉर योर सर्टिफिकेट फॉर दिस थिंग. अब एक्स्ट्रा करिकुलम में तुम्हारी सारी चीजें आ जाएंगी. अबाउट योर पार्टिसिपेशन, स्कूल एनुअल डे, कुछ भी था लिख दो. अगर बाद में रिमूव करना भी हुआ अबाउट दिस थिंग, कि अगर कोई नोटेबल और चीजें आने लग जाती, यू स्टार्ट डूइंग विद मोर स्टफ इनटू कॉलेज. अभी पार्टिसिपेट करोगे बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन में और इनटू आर सेशंस और समथिंग, तो you guys can have a look at this thing, add this thing into your extracurricular activity. Hobbies के अंदर, of course I am a big automobile aficionado, passionate audiophile as well as learn traveling. तो एक ही सेक्शन, नॉट अ बिग वन कि यहाँ पे लिख दिया यार मैं तो रोज गड़ी मारने जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं नहीं. तो कीप इट प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल. एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, वापस से तुम्हारी वो चीज आ गई. जोन जोन से अभी प्रोजेक्ट बनाओगे, इसको यहाँ तक भर दो. एकेडमिक प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता. एटलीस्ट सम टाइम जब रिक्रूटमेंट के लिए यू वुड बी सिटिंग फॉर एनी इंटर्न्स, दे वुड बी आस्क, दे कैन आस्क कि फाइनेंशियल रिसर्च एनालिसिस में करा क्या क्या, व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी, व्हाट वाज योर अप्रोच, कैसे कलेक्ट किया डाटा. तो यू शुड राइट अबाउट योर एकेडमिक प्रोजेक्ट. तो ये चीजें यू गाइज वुड बी गेटिंग फ्रॉम द कैंपस. कैंपस से मिल जाएगा ये वाला फॉर्मेट. नहीं मिलेगा, वी वुड बी गेटिंग इट अरेंज फॉर यू गाइज. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर CV ऑल्सो. अदर देन दैट, किसी और का डाउट आया था अबाउट दिस थिंग? भैया जो कोर्सेज है उसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखेंगे? नहीं, कोर्सेज के लिए यू कैन राइट, अगर वो सर्टिफाइड कोर्सेज है, अगर सर्टिफिकेशन मिली है उसके लिए. ओके, दिस थिंग, तो उसको भी, कोर्सेज को भी इसी में डालो. फॉर जब लिंक्डइन के ऊपर डालोगे तो वहां पे राइट इनटू दिस थिंग. सर्टिफिकेशन अगर मिल रही है कहीं से अबाउट योर दिस थिंग, इफ यू आर सर्टिफाइड एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और समथिंग, राइट इनटू दिस थिंग. और नहीं तो इनटू कोर्सेज में यहाँ पे तो ऐड कर दो. तो अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलम में ही ऐड कर दो हाँ. अबाउट एनी
Yes, yes. लाइक समटाइम्स अगर जैसे कोर्स होते हैं तो हम यूट्यूब से बहुत कोर्सेज होते हैं लाइक प्लेलिस्ट बनाई हुई जैसे डू यू नो अबाउट MIS? MIS, I guess I have heard his name. It is into finance? Yeah, so there's a course on crypto, like a Mm-hmm. detailed course on crypto. So it's there on a YouTube channel. So if we do that, where do we add that? Because it does not carry any certification, but it will gain a lot. It will help to gain a lot of knowledge. It definitely you would be gaining a lot of experience out of it. You would be learning a lot about the cryptocurrency and all. But unfortunately, you cannot add YouTube से सीखी हुई चीज या कुछ भी into your CV Like, because you don't have a proof ना for that thing. can YouTube. we add it as a skill that we have knowledge about this? यस डेफिनेटली. Definitely, we can और मैं add तो it as a बेस्ट skill. बोलूंगा अबाउट दिस थिंग. क्रिप्टो के बारे में कुछ भी सीख रहे हो, जस्ट गो इनटू दिस थिंग, पोस्ट करो उसके बारे में. क्या होगा, एक पैराग्राफ लिखना, एक फोटोग्राफ लगानी है यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में, कुछ भी. तो एटलीस्ट अब लोग यार दे शेयर अबाउट दिस थिंग. वन मोटिवेशन इंपॉर्टेंट स्किल टू लुक फॉरवर्ड टू इनटू 2022 इज एम्प्लॉय EQ और रीडिंग अबाउट बुक्स. कुछ भी पीपल प्लान टू गिव आउट दीज काइंड ऑफ स्टफ. तो अब मैंने तुम्हें आई शोड वन ऑफ माय फ्रेंड दिस थिंग, प्रोफाइल दिखाई दी तुम लोगों को कि ही स्टार्टेड अ 100 days ट्री अबाउट क्रिप्टो करेंसी. स्टार्ट डूइंग दैट. रिक्रूटर वहां से देख लेगा सीवी में अगर Okay. मेंशन. बट सीवी के लिए फॉर द स्टार्टिंग डेज डोंट गो फॉर फ्री कोर्सेज और समथिंग. स्टार्ट बिल्डिंग योर कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स. अभी सर्टिफिकेट्स के मैं बड़े सारे फ्री रिसोर्सेज भी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि कहाँ से फ्री में यू गाइस कैन गैदर आउट कोर्सेज. का ये मतलब नहीं कि 5 to 10,000 रुपीज खर्चने फॉर जस्ट अर्निंग अ सर्टिफिकेट. देर आर मेनी रिसोर्सेज जहां से सर्टिफिकेट मिल सकता है विदाउट दिस थिंग. अब सी जस्ट अ वेरी गुड एग्जांपल. यू टोल्ड मी कि अबाउट दिस थिंग कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है, वॉटन स्कूल से करा था दिस थिंग, बिजनेस एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन. आई गेस दिस इज नॉट क्लिकेबल राइट नाउ. ओके. कोर्सेरा के ऊपर किया था दिस थिंग. तो मैंने ये आई अपलोडेड दिस थिंग उनके वहां से आया था. व्हाई इट इज नॉट क्लिकेबल यार, जस्ट अ सेकंड. ओके. सी दिस वाज अ फ्री सर्टिफिकेट दैट आई अर्न फ्रॉम कोर्सेरा. अब ये उनकी वेबसाइट के ऊपर ही लोडेड है. तो कंप्लीटेड बाय अमित सिद्धर. दिस वाज अ फ्री कोर्स, एनरोल्ड फॉर फ्री. ओके. एंड दिस इज अ वॉटन स्कूल. वॉटन स्कूल का नाम सुना है किसी ने? Yes, Yes. भैया. Yes. यस हाँ भैया. भैया. Yes. वन ऑफ द बेस्ट Ivy League. मतलब. यस. तो वाटर स्कूल की उसके साथ इट हैज माय नेम एज वेल एज इट हैज द क्रेडिबिलिटी बिकॉज कोर्सेरा की वेबसाइट के ऊपर इट हैज बीन अपलोड. तो दीज काइंड ऑफ थिंग. अब दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कोर्सेज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और डोंट फोकस ऑन योर दिस थिंग जहां से सर्टिफिकेट ना मिले. ठीक है. But what kind of courses abhi यस. for semester? For this thing, what kind of courses you guys can go into? Sorry. तो अब आ जाते हैं कोर्सेज, कौन से वाले कोर्सेज हम लोगों को सीखने हैं. ठीक है. अब कोर्सेज के साथ साथ अबाउट दिस थिंग क्या कहाँ पे हम लोग पार्ट ले सकते हैं कि अबाउट सर्टिफिकेट चाहिए. वी कैन टेक पार्ट इनटू दिस थिंग enclaves as well as the thing the courses वाला पार्ट हो गया हमारा. बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स हो गए. any challenges that we can take part into, any webinars that we can take part into. तो अब आई एम शेयरिंग यू सम ऑफ द रिसोर्सेज. अभी इनको मैं इधर वी वुड बी शेयरिंग यू ओवर द ग्रुप और इन द चैट बॉक्स. टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग. some of my teammates who are in EDC right now, they know about D2C. किसी ने अभी तक ये वेबसाइट एक्सप्लोर करी है? Dare to compete? हाँ भैया, आज ही यस करी भैया. थी. Yes, I have. हाँ भैया. यस भाई. I've participated गुड also. गुड गुड गुड. चले. तो इसके ऊपर सी लॉरियल ब्रेनस्टॉर्म 2022 चैलेंज है. टेक पार्ट इनटू दिस थिंग. एटलीस्ट ट्राई. डोंट एम एट विनिंग राइट नाउ. नहीं भी होता विनिंग की छोड़ो अभी. बट दीज आर क्वाइट अ लॉन्ग वन. 14 February तक तो it would be running just your case submission. Then it would be happening your international finals, semi-finals. Take part into these kind of competitions. Have a team of 3 to 4 people. Free registration. Free registration. They would be giving you a L'Oreal Brandstorm certificate also. So something you can boast about in your CV, of course.
ठीक है. अदर देन दैट कोई भी छोटे अब लाइक आर सोसाइटी दैट इज ईडीसी वी ये डीटीयू का ही है. रिसर्च पेपर कंपटीशन. I already have a research paper. I can take part into this thing. National level business plan competition. How much is the fee of this thing? Registration fees is just nominal if you have 5 members. 20-25 रुपए देने हैं यार. तो can take part into it. Fees इसलिए रखी जाती है to see the person who is coming into this thing. It is very similar to our society only. We are running this thing business plan competition very soon. Take part into this thing. We would be awarding you with the certificate and all. You can write into this thing कि we took part into business plan competition. Someone from you guys would be winning that business plan competition. He can write about his achievement. तो वो achievement में चला जाएगा फिर. ठीक है. Study about these kind of stuff. तो quite a good website. अब hiring challenges about your this is for your internship. So there are taking a hackathons. But यहाँ पे hackathons जो होते हैं थोड़े से coding related होते हैं. But for the as a management student, aim for these kind of competitions. Ultimate PG, this is business quiz, business plan, marketing, cryptocurrency के बड़े सारे आते हैं, stock market challenges बड़े आते हैं, demo trading account दे देंगे and you guys have to work on this thing. Scholarship, internship, jobs के आ गए, there's product owner. So there are quite a many of jobs and all. But of course, if I wouldn't have gotten placement offer, I would have been applying to these channels also. लिंक्डइन के ऊपर बड़े सारे जॉब्स के आते हैं. इफ यू सी इनटू दिस थिंग मेरे को रोज अपडेट आते हैं अबाउट दिस थिंग एंड्रॉइड डेवलपर. तो एंड्रॉइड डेवलपर अलर्ट ऑन है. अगर मैं ऑफ कर दूंगा मेरे को नहीं करना यार एंड्रॉइड डेवलपर में. तो दीज आती है अप्लाई करने के लिए. इजी अप्लाई भी है. इजी अप्लाई से क्या होता है यहाँ पे इजी अप्लाई जब करोगे जहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे इजी अप्लाई आ रहा है. एक सेकंड में दिखा देता हूँ. अप्लाई इजीली आ रहा है यहाँ पे लिंक्डइन का. सीइंग दिस पॉइंट. Yes. Yes, we are. ओके. तो यहाँ पे ईमेल यू हैव योर दिस थिंग और यहाँ पे कुछ नहीं करना. सबमिट एप्लीकेशन एंड योर सीवी एंड एवरीथिंग हैज बीन सेंड टू देम. जबकि मेरे को करनी ही नहीं है बट आई हैव सबमिटेड दिस थिंग टू जस्ट टू शो यू गाइस. तो अगर ये लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी होती हम लोगों की जैसे लोडेड अप है. ठीक है. लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी होती यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी फिट इन माय रिज्यूमे. यू कैन राइट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. एक बार ही लिख दोगे हर बारी सेम चीज आ जाएगी. आर यू कंफर्टेबल. यस कर दो एंड नेक्स्ट इमीडिएट ज्वाइनिंग. यू कैन रिव्यू योर दिस थिंग. तो एक एप्लीकेशन चलेगी वेदर दे हैव अगर इनको सिलेक्ट करना होगा दे वुड बी गिविंग यू दिस थिंग. सिलेक्शन के लिए आ जाएगा मेल वगैरह आ जाएगी चीजें. तो दिस वे यू कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद रिक्रूटर्स ऑल्सो. रिक्रूटर्स के अलावा अगर ये दिस थिंग क्लाउड मुरी के बारे में है. क्लाउड मुरी का अगर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया वी कैन सर्च फॉर क्लाउड मुरी के एचआर के लिए ढूंढ सकते हैं और देयर एम्प्लॉयज और वी कैन सेंड देम द मैसेज डायरेक्टली. तो इस तरीके से वी कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद दिस. तो अभी D2C का क्लियर हुआ थोड़ा सा. दिस इज द थिंग यू कैन यूज टू एनहांस योर सीवी. कॉलेज की पार्टिसिपेशन कॉलेज के कंपटीशन कितने हो जाएंगे महीने में एक. इसके थ्रू अभी यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम ऑफ फ्री टाइम. स्टार्ट टेकिंग पार्ट इनटू दिस काइंड ऑफ कंपटीशन. नहीं भी जीतोगे कोई दिक्कत नहीं. एटलीस्ट यू वुड बी गेटिंग अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. एंड एट योर एज आई बिलीव पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि यहाँ पे अब यार ये भरना है. ये उन सब चीजें उससे भरनी है जो हमने अभी कॉलेज में करा है. स्कूल वाला भरा हुआ है. कोई भी अगर रिक्रूटर वगैरह एचआर वगैरह आएंगे दे वोंट बी सीइंग योर स्कूल की पार्टिसिपेशन. स्कूल में एनुअल डे में पार्ट लिया था. दिस इज माई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी. और कॉलेज में यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंसल्टेंट रोल एट डेलॉयट. तो हाउ दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड. तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो. अभी इसके बाद तुम शांत हो जाना कोई दिक्कत नहीं. उसमें भी चलेगा. बट एटलीस्ट कॉलेज की थोड़ी सी पार्टिसिपेशन कलेक्ट करके रख लो. एंड ऑफ कोर्स यू गाइस हैव टाइम. अभी जिन लोगों ने इंटर्नशिप के अप्लाई करना होगा दे वुड बी वर्किंग ऑन दिस थिंग. आई नो. Along with it, this thing, there is something like LinkedIn Learning. Okay, LinkedIn Learning में you can search for अभी. अच्छा किसी का डाउट था अबाउट कि कौन सी चीजें अभी हमें सीखनी चाहिए एज अ बीबीए स्टूडेंट. यू गाइज हैव एंटर्ड इनटू दिस थिंग. तो प्रिशा इट वाज योर डाउट आई गेस. Yes.
कैन यू टेल मी समथिंग कि आगे कौन सा जॉब रोल के लिए यू आर एमिंग एट? Mainly interested in doing MBA after eco honors. पर So अभी job. अभी तो कोई इंटर्नशिप तो करोगे एटलीस्ट? Abhi I'm currently doing a finance internship, basic फाइनेंस में करना है finance. ना, अकाउंटिंग में ही देखते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्किल के 63 रिजल्ट्स मिले, 63 कोर्सेज, दीज आर लिंक्डइन कोर्सेज, ज्वाइन फॉर फ्री फॉर दिस थिंग, 1 महीने के लिए। और एनीवन हु इज गोइंग, एनीवन क्या, तुम सभी लोग यार बीबीए वाले तो बेसिक थिंग इज टू हैव अ एक्सेल, एक्सेल का कोर्स करना बहुत जरूरी है। एक्सेल के लिए कर सकते हो इधर फ्रॉम लिंक्डइन लर्निंग और कोर्सेरा के ऊपर जाके एक्सेल के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। एक्सेल चाहिए हमें यहाँ पे। क्वाइट अ मेनी गुड रिक्रूटर्स, मतलब वी हैव आईबीएम का डाटा एनालिटिक्स कोर्स, एक्सेल फॉर बिजनेस, एवरीडे एक्सेल, और ये दीज ऑल आर क्वाइट फ्री। सी, enroll for free, start from 9 Jan, sign up करा, हो गया, नथिंग टू वरी अबाउट। तो फिर इनका फाइनेंशियल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट जैसे मैंने तेरे को दिखाया यार ये वाला। नहीं, जहाँ पे भी एनरोल फॉर फ्री होता है ना, दे ऑल आर पेड फॉर सर्टिफिकेट, सो यू कैन डू द कोर्स बट दे आर पेड फॉर, यू हैव टू पे फॉर द सर्टिफिकेट्स। फिर उसके अगर वो नहीं तो फाइनेंशियल एड के लिए एप्लीकेशन डाल दो, एक दिन में बैठ के 10-15 के लिए ये डाल दो फाइनेंशियल एड के लिए, हर किसी के पास आ जाएगी। आई शो यू कैसे डालनी है। दिस वाज समथिंग दैट वाज शोन टू अस फ्रॉम आवर प्रोफेसर ओनली। तो इसके अंदर कौन सा वाला कोर्स करना है, एक ही ले सकते हैं। तो एक्सेल स्किल फॉर बिजनेस एसेंशियल, गो फॉर समथिंग, ओरिजिनल प्राइस 5,200 समथिंग, टू गो फॉर समथिंग जो तुम्हें अगर ये तो अभी आई डोंट नो फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी इज दिस फ्रॉम, तो लुक फॉरवर्ड टू हैव फ्रॉम वॉटन और समथिंग दैट आई डिड। नेक्स्ट करा, रिक्वेस्ट डाली, prepare something education background. I already have this thing prepared. I'm an engineering graduate. My parents are already spent a lot on my graduation. ये वो सब लिख दो, prepare this thing out. I have reviewed, और some college annual income वगैरह लिखनी है, and this thing, if you send it every time, 100% chance है you guys would be receiving a this thing, financial aid मिल जाती है, and your registration for this course would be active, ठीक है। तो अगर किसी के नहीं होगी, दे कैन कंसल्ट मी, यू गाइज ऑलरेडी हैव माय लिंक्डइन प्रोफाइल और थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू व्हाट्सएप समवेयर है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी, डू दिस थिंग। बाकी अदर देन दैट, इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर फ्री कोर्सेज, Udemy can be one of them. इसके अंदर भी फ्री कोर्स होता है। आई हैव नॉट यूज्ड Udemy एंड ऑल, क्योंकि आई एम अ सेल्फ लर्नर पर्सन, तो काइंड ऑफ जैसा उसने बोला उदित ने अबाउट थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, बट आई हैव अदर स्टफ ऑल्सो कि मैं जहाँ से सर्टिफिकेट निकाल लेता हूँ, ठीक है। अबाउट योर कोर्सेज, जिसका भी जो भी है, दिस इज अनदर गुड वेबसाइट, EDX। तो इसके ऊपर फ्री कोर्सेज होते हैं। You guys can get into this thing, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है IBM का, देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। टू सर्च फॉर दीज काइंड ऑफ, ये वाले पेड हैं ऑफ कोर्स, ओके। फॉर द फ्री वंस के लिए यू हैव योर लिंक्डइन एंड दिस थिंग कोर्सेरा, these are the best one I believe from my side. Other than that, अगर किसी को, there are few other resources, but I can't tell you over this thing platform कि how you can hitch out that way to get the certificate and all. So start going through these kind of certificate पहले, फिर उसके बाद we can discuss on that also, ठीक है। किसी को डाउट इन वाले रिसोर्सेज वगैरह में that I showed you, I hope you guys have noted कौन कौन सी वेबसाइट सिखाई, डेयर टू कम्पीट, योर लिंक्डइन लर्निंग, योर कोर्सेरा, योर Udemy एंड edx.org। तो किसी को डाउट इन सब में, किसी में, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, आई बिलीव वी आर क्लियर ऑन दिस थिंग। I had a doubt. यस, जो D2C के थ्रू कॉम्पिटिशन्स में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस लिंक्डइन पे कैसे डालें, बिकॉज उसमें एम्प्लॉयमेंट टाइप और कंपनी नेम वगैरह मांगते हैं। ओके। एक्सपीरियंस के लिए सी फॉर दिस थिंग, अगर तुमने बिजनेस प्लान कंपटीशन वगैरह के लिए पार्ट लिया है, यू कैन शेयर इट थ्रू योर पोस्ट, पोस्ट में कर दोगे, यहाँ पे फीचर के अंदर आ जाएगा। फीचर ऑप्शन क्या है, यू कैन हाईलाइट सम ऑफ द पोस्ट जो मेरा आई हैव पोस्टेड ओवर दिस थिंग, मैं
इफ आई शेयर दिस थिंग, जो मैंने जैसे अब वो इंटर्नशिप के लिए गया था, अभी ये वाला पोस्ट है, आई कैन शो दिस थिंग इनटू माय फीचर लिस्ट, तो फीचर ऑन माय टॉप प्रोफाइल, तो ये टॉप प्रोफाइल के ऊपर फीचर में चला जाएगा, एंड द रिक्रूटर वंस दे वुड बी सेइंग यहाँ पे आएगा यू हैव वन दिस बिजनेस प्लान कंपटीशन, क्वाइट दिस थिंग, एक वे रास्ता ये हो गया, या ठीक है। अदर देन दैट एक्सपीरियंस में मत डालो उसको, एक्सपीरियंसेस जस्ट कीप योर एक्सपीरियंसेस लिमिटेड टू इंटर्नशिप्स ओनली, अदर देन दैट जस्ट ऐड दिस इनटू योर अचीवमेंट्स, ओके, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में डाल दो, और इनटू अचीवमेंट्स में डाल दो नीचे, इनटू योर एक्सपीरियंस दिस में थिंग, पोजीशंस वगैरह डाल सकते हैं। हाँ, position. Only internships. Write about your internship, professional internship that you have, or some kind of position you are holding in any club or something. ठीक है? ओके Clear? Any other doubt from someone else? Guys, we are going to end this session, so keep your doubts out. I guess you guys are clear with this thing. सारे clear हो गए होंगे doubts and all, and I'm hoping you guys prepare a good LinkedIn profile. Yes, भैया. Yes, Okay, भैया. great. So on the ending note, can we switch on your cameras for just few seconds and we